नोट कर लो, उसे बता दो। Good morning, everyone. I, Dr. Priyank Singhal, Associate Professor, CCSIT, Tirthankar Mahavir University. And I am Dr. Sharani Minoria, Associate Professor, CCSIT, Tirthankar Mahavir University. Welcomes you all on day 2 of 12th International Conference SMART 2023 on Systems Modeling and Advancement in Research Trends. Our ancient rishis have contributed great wisdom and science for the society. Mantras is one such important tool in Vedic sciences. Let us close our eyes and take a deep breath to recite mantra for right intellect and knowledge, that is the Gayatri Mantra. Om Bhur-Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. गायत्री मंत्र का भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे. International conferences are really very important for the growth of society, for the upliftment of the real problems that are existing in the society. Conferences give a very good platform for the budding researchers, for our students to learn about what new ongoing trends are there in the market and how we can move towards the growth of the nation. Our international conference SMART 2023 is focused on various dimensions and it caters the need to generate new ideas and it helps the research of the country to move to a level up. तमसो मां ज्योतिर्गमय मंत्र जपे हर एक दुर्बुद्धि तम हटे सदा जागे ज्ञान विवेक दीपक ज्ञान जलाइए अंधकार हो नष्ट अंतर मन ज्योति जगे दूर सभी हो कष्ट. Light symbolizes knowledge and divinity. It not only dispels darkness but also illuminates our souls. In the spiritual world, light means life. With this noble thought, let us initiate this big day with our traditional auspicious lamp lightning in front of Goddess Saraswati, a symbol of knowledge, wisdom, art, and nature. I would like to request the excellencies, distinguished guests, and all the dignitaries to please come forward to light the lamp before Ma Saraswati and inaugurate the function. ऑनलाइन है ना. ऊपर हो जाएगा.
God blesses us all. Takings free of obstacles by extending your blessings to all our work always. So let's begin with the devotional fervor by offering our prayers to Lord Ganesha through the Ganesh Vandana. So ladies and gentlemen, allow me to please call our dedicated students on stage. ये इसका रहा है, बड़ा लंबा है। आराम से ये खा लिया। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सिस्टम जूम पे नहीं है, हट गया, रिसेट हो गया। देखो अमर तुझे गुण गाती तारे गिरनाए तुझे नाम देती अमर तुझे गुण गाती तारे गिरनाए तुझे नाम देती प्रणाम गुरु मेरे को ज्ञान दाता प्रणाम गुरु मेरे को गुरु ज्ञान दाता रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से झुका है मोरिया कोई धमका हम गली राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले रुकने ना
सहस्र भक्त तू एक करता द्वेष मुक्त मत तू जिसमें वास इसीलिए तो पहले बोले पप्पा What a mesmerizing performance, extremely timeless moments. A big round of applause for our performance, ladies and gentlemen. Now moving ahead. हाँ बताओ पता नहीं किस रूप में आकर सारे चारों में नारायण सब। मिल जाएंगे, कौन सा वाला निर्मल मन सेवन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएंगे. अरे कौन सा Let's सेवन resound the hall सिक्स with applauses सेवन for our रुक जाओ next देखता performer. हूँ Ladies and gentlemen, now allow me to please call our next performer, next painter of this timeless moments on the stage. Please welcome them with applause. भैया सब ऑन है, सेवन भी ऑन है। हाँ क्या दिक्कत आ रही है? अरे जूम आईडी सही डाली है तुमने? तो क्या दिखा रहा है उसमें? तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। तुम जुड़ गए हो उसमें? मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है। सुनील की लैब में सारे चारों सिस्टम पे चल रहा है। सुनील की लैब में चल रहे हैं चारों सिस्टम पे एडमिन। मेरी चाहत पे चल के आज चारों बजाओ ढोल स्वागत मेरे घर हम आए भाषा मेरी से जुड़ी मेरी कहानी से आज खुश मेरे आंसू के तरफ के नाम आए
What a performance. Big round of applause for our performers. Applause for our students, please. Tirthankar Mahavir University has been established under the Act of Government of Uttar Pradesh number 30 of 2008 on 14th September 2008 under the aegis of Tirthankar Mahavir Institute of Management and Technology Society, Muradabad. The University Grants Commission (UGC) empowers Tirthankar Mahavir University to award degrees under Section 22 of the UGC Act 1956. The courses have the necessary approval of regulatory bodies. The university has earned international fame in the area of medical science, dentistry, management, and engineering. Students from all across the world are enrolled here for higher education in various disciplines. About the college, I would like to highlight that College of Computing Sciences and Information Technology (CCSIT) is a prime constituent of the university established to meet the growing needs of education in engineering and computing sciences in diverse functional areas of the corporate world. The college has established itself as a hub of multifaceted academic, research, and consultancy services and guides students on how to climb up the corporate ladder with total professionalism and commitment. The college offers a wide range of academic programs at undergraduate, postgraduate, and doctoral levels. All the courses are designed taking into consideration the specific needs of the market and industry. The emphasis is laid on both theoretical and practical training to provide exposure to the students in various areas of engineering and computer studies. For this, the dignitaries of national and international repute are invited to guide the students in addition to their input from the acclaimed faculty of the college. And this conference is serving that need itself. So I would like to request a technical team to please play the video related to our university. हम हैं विश्वास से भरे TMU आगे और ऊंचा बढ़े TMU हम हैं विश्वास से भरे TMU आगे और ऊंचा बढ़े जीव में है जिनकी सिद्धांतों का दम सत्य की शरण और अहिंसा ही धर्म वो ही करेंगे देश का निर्माण रोशनी के रस्तों में रखते हैं कदम ज्ञान का सूरज निकली है किरण हम हैं विश्वास से भरे TMU आगे और ऊंचा बढ़े हम जाने एक बार मिलजुल के रहने दो सबकी ये ज़मीन जियो और जीने दो सबको तो खुशी सबको तो बना रोशनी के रास्ते पे रखते हैं कदम ज्ञान का सूरज निकली है किरण हम हैं विश्वास से भरे
आगे और ऊंचा बढ़ेगी। वही चिरान हो जाएगी। 3 तो ये मैंने कहा और से 2 तो मैंने आकर सब बंद कर दिया। चिरान हो जाएगी। वो कह रहे हैं तो कल ही मुझे पकड़ के ले गया, मैं खाना खा रहा था। कुछ पाने की हो आसपास, कोई करना हो जो खास खास। आज लेट हो गया था। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले उम्मीदें हंसे। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले उम्मीदें हंसे। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। सूरज से भाग भाग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं एक तो वालों को ध्यान रखता हूँ, एक फूट की तो है बोतल। मालूम है ना? हाँ, एक फूट की बोतल है। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को छीन ले, आशाएं वाईफाई लगा रखा है, चला रखा है। लाइटिंग नाइट का नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
Kindly raise the curtains, please. Now it's time to welcome the dignitaries onto the dais. So now, on the note, I consider a great honor to welcome our chief guest, respected Dr. Prakash Chauhan, Director, NRSC, Indian Space Research Organization, ISRO, Hyderabad, onto the dais. May I request you, sir, to please raise the dais. A big round of applause. Now I request our guest of honor, respected Dr. Unnat Jain, researcher, Fundamental AI Research, FAIR at Meta Pittsburgh, USA, to please grace the dais. Thank you, sir. Now I would like to make a humble request to our guest of honor, Dr. Varun Kakkar, observer from IEEE, Associate Professor, Department of ECE, BG, Dwarahat, Uttarakhand, to kindly come and grace the dais. In continuation, I would like to request our guest of honor, Dr. K.C. Mishra, Joint Secretary, IEEE UP Section, HOD, Electronic Engineering Department, Women Institute of Technology, VMSBUTU, Campus Institute, Dehradun, to kindly grace the dais. Now I request Professor Rakesh Kumar Dwivedi, sir, Director and Principal, FOE CCSIT, TMU, to please grace the dais. Now I request Dr. Ashin Kumar Saxena, sir, Vice Principal, CCSIT, Tirthankar Mahavir University, to please grace the dais. I would also request Dr. Shambhu Bharadwaj, Head of Department, CCSIT, Tirthankar Mahavir University, to please grace the dais. Thank you all for your great presence here. Flowers are the bounty of nature, which express humility and tenderness of human emotions. They reflect both warmth and welcome. So moving ahead, now it is time to felicitate our guest with flowers. I would be glad to request Professor R.C. Tripathi to please welcome our chief guest, respected Dr. Prakash Chauhan, Director, NRSC, ISRO, Hyderabad, with a bouquet and shawl as an expression of our affection and reverence. Now I would like to request Ms. Hina Hashmi to please welcome our respected guest of honor, Dr. Unnat Jain, researcher, Fundamental AI Research, Meta Pittsburgh, US, by presenting a bouquet as a token of respect. I would now like to request Mr. Abhishek Saxena to kindly come and honor Dr. Varun Kakkar, observer from IEEE, Associate Professor, Department of ECE, BGKIT, Dwarahat, Uttarakhand, by presenting a bouquet and shawl.
I would now like to request Mr. Manoj Gupta to kindly come and welcome Dr. K.C. Mishra, Joint Secretary IEEE UP section, and welcome him with a bouquet and shawl. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. Vineet Saxena to kindly welcome our Director and Principal, Dr. R.K. Dwivedi, sir, with shawl and bouquet. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. Pradeep Sharma to please offer bouquet and shawl to Dr. Ashin Kumar Saxena, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. Harjinder Singh to kindly welcome our respected Head of Department, Dr. Shambhu Bharadwaj, with bouquet and shawl. Thank you all. Moving ahead, small cheer and great welcome makes a merry fest. A true welcome is never complete without warm words and warmer gesture. So now I consider it a great honor to welcome respected Dr. Rakesh Kumar Dwivedi sir, our dynamic director and principal FOECS, Tirthankar Mahavir University and Conference General Chair SMART 2023 on stage to please accord a formal welcome to the dignitaries and welcome. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Shalini and Dr. Priyank. A very hearty morning to everyone joining us today. A special thanks to Dr. Prakash Chauhan, Director NRSC ISRO Hyderabad, who came from Hyderabad for this conference. Thank you, sir, and my sincere welcome goes to you. Dr. Unnat Jain, throughout first. Not much introduction because I would like to minimize the time so that speakers and source persons can speak much. Throughout first. Director's Gold Medal at IIT Kanpur. Then first rank holder in MS program at University of Illinois. Then Best PhD Award from University of Pittsburgh, University of Illinois, and presently working with the research team at Meta. So one is having a very rich experience of science, technology, and humanity, and one is having Josh, along with sharp temperament of knowledge in technology domain, and working with the fantastic organization who is implementing all kind of tools and technologies in their platforms. So welcome you, Dr. Unna. My worthy colleagues from IEEE UP section, because I am also the part of IEEE UP section, and two observers, not as of now observers, they are in fact observing the conference, but as of now they are guests. And racing the dice, Dr. Varun Kakad from Dwarahat Engineering College, serving for Uttarakhand, son of soil, one of the fantastic place, in fact. Shri K.C. Mishra साहब आप देहरादून में हैं and gracing the occasion. My worthy colleague, Vice Principal Dr. Ashendra Kumar Saxena, Head of the Department Dr. Shambhu Bharadwaj. They are my long-term ally. 2 decades this triplet bond is going on, and one of the very cohesive bond
You can say triplet bond in chemistry, one of the very, very cohesive bond. So we three are trying to manage CCSIT with the support of all our worthy faculty colleagues and teams, with the focal point to how we can give a better service, not service, you can say seva to our students, so that they can shape their career in better way, because future lies on you. Next, you are. Okay? So I assure you that this conference will prove to be fruitful and informative for all the members participating in the conference. SMART 2023 team will be your host for this conference, and it is my pleasure to welcome you all in our prestigious annual conference, SMART. In this auditorium, many faculty members, deans, directors, and principals of other administrative authorities, dignitaries, delegates, participants, members from press and media, I welcome you all and thanking you for gracing the occasion of SMART 2023, which is in continuation since last 12 years. This is the 12th IEEE International Conference on System Modeling and Advancement in Research Training without any gap. And this is a clear demarcation that SMART is really going to be smart in future. All right, friends, this year we have chosen one, not five. 105 पेपर हमने select किए हैं publication के लिए, और उनका presentation हमने 15 technical tracks में किया हुआ है. Technical sessions हैं 15 technical sessions on 10 tracks, and 44 keynote addresses हैं जो कल से लगातार parallel sessions में हो रहे हैं. उनके target audience उनको distributed हैं. इस साल we have this year we have received the submissions approximately 500 from 11 countries including India. We have chosen 105 papers. Further, my dear young friends, what is exactly the purpose? Purpose is to make India proud. This is the ultimate objective. Am I right? And youth are pivotal. कुछ शॉर्ट पढ़े हो ना सब लोग, पाइवोटल एलिमेंट ढूंढते हो ना, जहां एक तरफ सब बड़े एक तरफ छोटे. तो अब हम फिक्स करना चाहते हैं एलिमेंट को उसके ऑन प्लेस, एंड उस फिक्सिंग में इकोनॉमी, फ्यूलिंग द इकोनॉमी is major point. All right, so fueling India's ambitions through technology, innovation, and inclusion and impact. Am I right? As India steers towards exponential and inclusive growth with the dynamic spirit of entrepreneurship, resilience of the academics, and the ever-evolving digital infrastructure. Young friends, technology sector is playing a crucial role in the fueling of economic growth while creating millions of new livelihood opportunities. In tandem with Indians' sustainability goals, Tirthankar Mahavir University strives towards local for vocal. This is the dimension we have to work upon, and increasing the use of renewable energy. So I speak too much. I'm fascinating to speak, and I speak, you hear. But today's platform to hear more, because we have the people who is having a wider experience and exposure better than me. लेकिन हमें हौसला बना के रखना है आगे बढ़ने का. तो बस खत्म करूंगा अपनी बात एक छोटे से शेर के साथ. जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का,
तो देखना फिजूल है कब आसमान का, तो देखना फिजूल है कब आसमान का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for your kind address and the motivating words. Our special guest, Dr. Rajiv, professor from Muradabad Institute of Technology, Muradabad, is here with us. I would like to request Mr. R.P. Singh to kindly welcome Dr. Rajiv with bouquet. We have Dr. Aditya Sharma, Registrar, Tirthankar Mahavir University, who will be connecting with us virtually. Due to his busy schedule and engagement, he is unable to be present here physically. So I would request our technical team to please connect Dr. Aditya Sharma, sir, for his address. A very good morning. Am I audible? Yes, sir. A very good morning. I, on behalf of Tirthankar Mahavir University, welcome all the national and international delegates, those who have taken out their special and precious time to contribute for this conference and have come up far from various parts of the country and abroad to our university. I welcome all the delegates from India and abroad here. On this occasion of SMART conference, which is the 12th conference in consecutive years, I congratulate Professor R.K. Dwivedi ji, Principal, College of Computing Science and Director, Faculty of Engineering, who has been working tirelessly to organize this conference and has it's really a great honor and pleasure for us at the same time that he has been able to organize this conference continuously for last 12 years. And I wish that he may continue to organize this conference in the long run. I congratulate you and your entire team, Professor Dwivedi ji. As you know that this conference is going to host a number of technical papers, presentations, the research work which has been done by our academicians over the past years. I think that, and I'm confident rather that with this conference, with this platform, the research which has been done by our academicians would be shared with all the audience and those who are present here in this conference, either in online or in offline mode. And I'm sure that conferences like this are going to pave a way wherein the innovators will be brought together and can contribute for the development of the profession and various other technologies, and thus contribute to the growth of the nation. So I really feel elated to see that the entire team of College of Computing Science and Faculty of Engineering is putting efforts in bringing all such innovative ideas through research papers and all from various by inviting the researchers to this conference. I really congratulate you all and I wish you all the best. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to take the moment and request all our esteemed dignitaries on the dais to kindly release the proceedings of the conference. And also, we will be releasing Computing Vision Magazine, Volume 9, Issue 1.
The digital copy of the proceedings is available online, and also all the issues of computing vision is available on our college website. I request everybody for please applause, please. अब ऑनलाइन और कौन है हमारे पास? ये कोई और जुड़ा हुआ है, ये कोई और जुड़ा हुआ है, दीप अजवानी, ये कोई यहाँ जुड़ा हुआ है। दीप? हाँ, दीप अजवानी। Students, please show your energy. Good round of applause. Thank you. मैं उसमें देखता हूँ चार्ट, वो लाया था बैग में रखा है वो उधर रखा बैग में। Thank you all. Diamonds are forever. The world is full of diamonds and gems, and we are fortunate to have some of them here today to add their expertise as a golden feather in success set of SMART 2023. Yes, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce you our guest of honor, Dr. Unnat Jain, the dynamic young researcher associated with Fundamental AI Research (FAIR) team at Meta Pittsburgh, USA. He is a proud alumni of Indian Institute of Technology (IIT Kanpur), India, with Director's Gold Medal in completion of dual degree in Electrical Engineering in the year 2016. He has earned his MS in Computer Science in 2018 with Best Thesis Award. He pursued his PhD Computer Science from University of Illinois at Urban Camping with an outstanding PhD student award. He has published many research papers in many journals with good repute. Likewise, he has made a special identity in research by winning many awards and scholarship as India Scholarship Award, OPJEMS National Scholarship, Best Graduate Students, Outstanding Intern, and many more. So, with this list, long endless list, I welcome you, sir. ऊपर नहीं आ रही, ऊपर नहीं आ रही, वो एक्सटेंड करेगा ना, कर दिया एक्सटेंड उसने। एक्सटेंड हो गया है। Hello. How are you? Was this better or is this better? This one? I'm Unnat. I had to request ma'am to reduce my awards, and I didn't want to take much time on describing me. I'm here to describe AI to you guys. And I have a introduction in the slides as well. So let me go and next slide. Okay. And am I audible properly? I'll try to mix in some Hindi and English. Usually I give these talks in English, but I think I'll connect better to the masses here with a mix of English and Hindi. So there we go. Here is my introduction. This is my webpage. बस snapshot area मैंने अपने webpage का, and I just pasted here because थोड़ी जल्दी में slides बनाई हैं. Okay. Oh. So this is my introduction. I started I think my research journey started at IIT Kanpur in not too far from here.
And in my second last year, I went for an internship at UMass Amherst in the US. वहाँ पे I got exposed to computer vision, machine learning. In 2015, it was not as hot as it is right now. We were still discovering what machine learning is. And I fell in love with machine learning. उसके बाद से I have been trying to hone my skills in machine learning. I went to University of Illinois. It's in the heart of the country in the US. वहाँ पे I got a master's. Then I wanted to pursue science further. I started doing my PhD, and during my PhD, I interned at Uber's self-driving team. वहाँ पे यहाँ तो driving is difficult with self-driving, but in the US they're trying to automate driving as much as possible. And I worked as a self-driving team. There's a non-profit institute called Allen Institute for AI. One of the co-founders of Microsoft donated most of their earnings towards the advancement of AI, Paul Allen, and they created this non-profit institute called Allen Institute for AI. And I worked there for a couple of summers as well. Then I interned at Facebook. We created some very interesting AI tools, and later at Google DeepMind as well. So I have a lot of experience in the industry and academia, and this is too detailed in science, but I'll try to demystify some of the things. And recently I started, after I finished my PhD, I came to University of the Carnegie Mellon University and at Meta AI. दोनों के साथ joint postdoctoral research, industry and academic side पे मैं काम कर रहा हूँ. But this is the introduction I usually give to a technical audience जो मेरे घर के पास नहीं है. But this is the introduction I want to give to you guys at TMU. This is where we are, and not too far from here is Rampur, जहाँ पे मेरी family roots हैं. This is a giant temple. उसकी just सामने जो घर है वो मेरा है. And that is where I was brought up. This is Don and Donna Convent जो अब रहा भी नहीं, लेकिन शाहजहानपुर में एक छोटा सा स्कूल है Don and Donna Convent, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है. And इसमें जो ये गंजी पहना हुआ इंसान है वो मैं हूँ. 2011 में की फोटो है ये, तो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ओवरऑल नॉट टू फार आउट. ये इंट्रोडक्शन स्लाइड इसलिए डाली मैंने जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग ऐसा ना सोचें कि कोई दूर का इंसान आया हुआ है, हम भी यहीं के हैं. तो नॉट टू फार फ्रॉम हियर, रामपुर, शाहजहानपुर, कानपुर, यूपी के ही हैं. तो द थिंग्स आई शो यू टुडे are just a senior version of what you can achieve in 10 more years. So don't have to feel limited in any way. मेरे जो पोस्ट डॉक एडवाइजर हैं वो बरेली के हैं, जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और मेटा में काम कर रहे हैं. तो हम ही सब लीड कर रहे हैं एआई के रेवोल्यूशन. जस्ट थोड़ा समय और डेडिकेशन की बात है. एंड उससे मैं एक बार वापस अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा. एआई तो उबर ड्राइवर्स और चाय वाले भी हमें एआई के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, राइट? चैट जीपीटी के बारे में आपने सबने सुना होगा, या फिर कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का क्रेज सुना होगा न्यूज़पेपर्स में. ह्यूमनॉइड्स बना देते हैं वो लोग न्यूज़पेपर्स में टू शो कि एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड एक्सेट्रा. तो अब बहुत लोगों को एआई के बारे में पता चल गया, लेकिन एआई क्या है वो बहुत कम लोगों को पता है. एंड हम जो साइंटिफिक माइंड्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एआई, टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्पस एंड प्रोपोगेट दैट अंडरस्टैंडिंग टू अदर पीपल. So I'm reaching out to those people in the audience जो AI को as a buzzword जानते हैं या फिर AI के बारे में सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन AI क्या है उसको मैं डीमिस्टिफाई करना चाहता हूँ आज की टॉक में. मेरे पास छोटा ही टाइम है और सर ने बहुत सारी चीजें मेरे को दे दी थी कि तुम हायर एजुकेशन के बारे में बताओ और मोटिवेट भी कर दो, जोश बढ़ा दो इन लोगों का, एंड साथ में कुछ AI के बारे में बता दो. तो थोड़ा सा मिक्स मैच है. थोड़ा सा मैं हायर स्टडीज के बारे में भी बात करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली मास्टर्स को कैसे सोचना है, पीएचडी के बारे में कैसे सोचना है. लेकिन अब 15-20 मिनट में मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकता, तो आपको कभी तो जब भी आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैं टाइम रखूंगा. तो जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी फॉर्म के, आप यहाँ पूछ सकते हैं. कुछ दिन मैं यहीं पे हूँ, आप मुझसे बाद में भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं. ओके, विद दैट डिस्क्लेमर, विद दैट इंट्रोडक्शन, आई वांट टू स्टार्ट डीमिस्टिफाइंग एआई. मैं कल जब स्लाइड्स बना रहा था तो आई वेंट टू गूगल एंड सर्च फॉर एआई. जो पहली इमेज आई मैंने उसको यहाँ पे डाल दी, लेकिन बहुत डिपिक्टिव एंड सिंबॉलिक इमेज है. इसके राइट साइड में आप ये ह्यूमनॉइड टाइप की चीज देख रहे हैं जो आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, ऐसे मतलब एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड वाली. और लेफ्ट साइड में आप ये मैथ देख रहे हैं, प्रिंसिपल्ड वोर्नॉइड सेल्स एंड लॉगरिथम्स के बारे में. यहाँ पे
ये actually is very symbolic and poetic about these are the two sides of AI we are talking about. There is the AI, maybe you guys can see the text in the bottom. AI एक right side में buzzword बन के भी हमारे पास है और AI की science भी हमारी दूसरी side है. तो AI की ये दो sides हैं. मैं as a scientist, as a student, जो एक बार PhD कर लेता है वो lifelong student रहता है. तो as a student and as a scientist मैं आपके पास on the left hand side के बारे में बात करने आया. मैं कुछ 3 एग्जांपल्स लेके, कुछ 2 मेरे हैं जो मेरी खुद की रिसर्च है और एक चैट जीपीटी का एग्जांपल मैंने आज सुबह बनाया. I'll show you 3 examples on the right hand side जो buzzword वाले AI है और दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो साइंस है वो बहुत सिंपल फंडामेंटल है. कुछ मैंने अपने सेकंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में सीखी थी. So with that I'll start the examples. So right side में I'll talk about AI as a buzzword और left side में I'll talk about AI as a science. तो I picked up this article, ऐसे ही मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में गूगल सर्च कर रहा था एंड आई फाउंड कि प्रोफेसर सब थोड़े परेशान हो गए हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाएं, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो हाई स्कूल के और कॉलेज के भी असाइनमेंट सॉल्व कर देते हैं. कुछ कोड तो मैं खुद लार्ज लैंग्वेज मॉडल से लिखवाता हूँ मेटा में. तो देयर इज ऑल दिस हाइप अराउंड चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. मेटा का ओपन सोर्स मॉडल है लामा. ये दीज आर अवेलेबल एंड यू कैन go on your browser and actually play with these tools. So I went today morning on one such tool called ChatGPT and I asked it a few questions. So आज मैं सुबह गया and I asked ये maybe play कर देंगे फाइल हो. तो मैंने उसी को बोला कि तुम मुझे LLMs के बारे में बताओ. I asked LLMs to explain what LLMs are. And this is Unnat Jain, and then it replied, "Hey Unnat, how can I assist you today?" This is me typing actually, जो आवाज आ रही है वो नीचे आ रहा है. Maybe you guys can read. Okay. हाँ तो एक बार पॉज करेंगे. So I was asking it कि I'm going to give a talk at a technical school and how do I motivate LLMs to bright and young minds in the audience? And it gave me a very nice list of things I could do. One of them was an interactive demo, so I created this. I recorded my screen and created this interactive demo. This is a tool which is available for free, and the advanced version is not available for free, but most of these tools are available for free. आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हो सकता है असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इट इज गिविंग वेरी रीजनेबल आंसर्स ऑन हाउ टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम, एज ओपन एंडेड एज गिविंग अ टॉक टू यंग एंड ब्राइट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री. So after it gave a list of suggestions, I asked more follow-up questions. I wanted to ask what is the science behind ChatGPT. You're able to build this nice tool, but what is the science behind? And if there are 2 things you can tell me which define the science behind these ChatGPT models. So then it gave me two such answers. उसने बताया कि there is this field of deep learning जिससे ये large models बने हैं, और दूसरा है this field of pre-training and fine tuning कि कैसे इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है. तो वो दोनों चीजें यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग एंड ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग. एंड एक्चुअली दैट इज ट्रू. दीज आर द 2 साइंटिफिक थिंग्स जो इस बज ऑफ चैट जीपीटी को प्रमोट कर रहे हैं. और अगर आप लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के थोड़े बेसिक्स से अप्रोच करेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद भी समझ सकते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट I think I ended up just thanking ChatGPT. Thank you so much for all the help and helping me present. Oh yeah, तो जो डीप लर्निंग मॉडल है जो ChatGPT या इन सब मॉडल्स को सपोर्ट करता है वो है ट्रांसफॉर्मर्स का. और उसने मुझे 3-5 सेंटेंसेस में उसके बारे में समझा भी दिया कि ask कि can you explain it to a high school student? मैंने सोचा कि कुछ हाई स्कूल के बच्चे भी होंगे हो सकता है. तो and it gave a very reasonable answer. और उसने जो नीचे ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि मॉडल्स को कैसे ट्रेन करते हैं उसको भी उसने 3-5 सेंटेंसेस में एज एन एग्जांपल समझा दिया. फिर आई थैंक ChatGPT एंड सेड दैट.
And then I continued working on these slides. Next, please. And अगर आप if you go to the basics, the science behind these fascinating models जिसके बारे में आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, actually दो बहुत फंडामेंटल और बहुत सिंपल चीजें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं. एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन की वैल्यूज एंड की वैल्यू एंड क्वेरीज. 3 मैट्रिसेस होती हैं, उनके बीच में कुछ इनर प्रोडक्ट लेके ये लोग ट्रांसफॉर्मर्स बना दिए हैं. नॉट द ट्रांसफॉर्मर्स वी लाइक बम्बलबी, बट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स जो which support, which is a deep learning model which supports these large language models. इसकी इक्वेशंस आप 5 लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं. मैंने लिख के दी. तो इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. एंड नीचे मैंने एक लिंक भी दिया है which has an illustrated example of transformers. You and I, anyone with a basic understanding of linear algebra, inner products कैसे लिए जाते हैं, matrices कैसे बनती हैं, वो can understand this. And जो training paradigm है जिसको उसने pre-training fine tuning बोल के थोड़ा सा buzzwords use किए थे, वो भी बहुत simple है. जैसे कि अगर मैंने आपको एक sentence दे दिया, my name is, या फिर तीर्थंकर महावीर space, तो जो नेक्स्ट टोकन है या नेक्स्ट वर्ड है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है. उसी सिंपल टास्क पे ये बड़े बड़े मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं कि यू टेक अ सेंटेंस, एक पार्ट तक आपने उसको मॉडल को दे दिया और फिर अगला जो सेंटेंस का वर्ड है या फ्रेज है वो आप उससे प्रेडिक्ट करवा दें. दैट बेसिक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग कैन कम विदाउट एनी एनोटेटेड लेबल्स, कि इसके लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करनी पड़ती जाके इन वेबसाइट्स पे. सिंपली कोई भी टेक्स्ट ले लो, उसका एक पार्ट दिखा दो और बाकी पार्ट प्रेडिक्ट करवा दो. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि वो खुद ही अपने आप को सुपरवाइज कर रहा है. बस ये दो चीजें ये चैट जीपीटी बना देती है. थोड़ा इसके बाद कंप्यूट और ये सब फेंकना पड़ता है उसके ऊपर, बट इफेक्टिवली, साइंटिफिकली, फंडामेंटली सिर्फ दो ही चीजें हैं जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आप और मैं 1 महीने में भी समझ सकते हैं. हमने समझा भी. मैं तो विजन में काम करता था, लेकिन अब लैंग्वेज भी समझ लेता हूँ. तो ये हो गया एक एग्जांपल जहां पे हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बज़वर्ड वर्जन देखा जिसमें इट विल टेक ओवर एआई एंड इट विल सॉल्व असाइनमेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू. एंड उसकी साइंस जो है वो फंडामेंटली कितनी सिंपल और बेसिक है, और उसके टूल्स और एक्सप्लेनेशंस वेब में हर जगह अवेलेबल है, और आपको डेमो के साथ खेलना है तो वो भी फ्री है. तो एक ऐसे ही और एग्जांपल ये मेरे काम का है. एक आर्टिकल मैंने ढूंढा वेब पे इस मेरे पेपर के बारे में. उसमें उन्होंने लिखा कि द फेसबुक इज बिल्डिंग होम रोबोट्स टू फाइंड योर रिंगिंग फोन, या फिर होम रोबोट्स कैन फाइंड योर लॉस्ट रिंग फोन. दिस इज हाउ जो साइंस को नहीं समझते वो उनको ऐसे अट्रैक्ट किया जाता है, ये बज़वर्ड्स लगा के या फिर थोड़ा सा मसाला लगा के. आप तो न्यूज़ देखते ही हैं, लेकिन जो इसकी साइंस है वो मैंने खुद की थी अपने इंटर्नशिप में, एंड वो बहुत बेसिक थी. So let me play an example of जो मैंने डेमो बनाया था. तो हमने ये 3D सीन रेंडर किया था, और उसमें ऑडियो हम कोई भी पॉइंट पे कोई भी ऑडियो सोर्स लगा के उसका रियलिस्टिक लेफ्ट और राइट ईयर में आपको कैसे सुनाई देगा उसकी अकूस्टिक रेंडरिंग हमने इस टूल में बनाई थी अपने रिसर्च पेपर में. एक बार बैक करिए, स्क्रॉल करिए. इट्स ओके, इट्स ओके. इट इज अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस. आप गूगल करेंगे, साउंड स्पेसेस नाम है इसका. तो इसमें जैसे हम लोग नेविगेट करते हैं एनवायरनमेंट में, और किसी की अगर आवाज उस कॉर्नर से आ रही है वो बदलती है, राइट, कि आप सेंस कर पाते हैं आंखें बंद करके भी कि मुझे राइट साइड में जाना है क्योंकि राइट साइड में वो आवाज आ रही है. देयर इज दिस बाइनॉरल एस्पेक्ट कि दो सोर्सेज हैं आपके जिससे आप ऑडियो को रिसीव करते हैं. वो आपको डायरेक्शनैलिटी बताता है और डिस्टेंस बताता है कि कितनी दूर है वो चीज. उस चीज को हमने सिमुलेट करने की कोशिश की थी इन 3D एनवायरनमेंट्स, जिसमें आप गेम्स, GTA टाइप के गेम्स खेलते हैं, वो भी तो 3D एनवायरनमेंट्स हैं. उन्हीं टाइप के एनवायरनमेंट्स में हमने इसको ऑडियो को सिमुलेट करने की कोशिश की थी, और हमने ऐसे एजेंट्स बनाए जो AI एजेंट्स जो इस सोर्स को ढूंढ सकते हैं, कोई भी सोर्स को सिमुलेट भी कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं. और इसकी साइंस भी बहुत बेसिक थी, बहुत सिंपल थी. हमने सेकेंड ईयर में सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ी थी, जिसमें कोई इनपुट के ऊपर एक इंपल्स रिस्पांस लगा के एक आउटपुट बनाया जाता है. किसी ने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी होगी यहाँ पे तो उसमें ये ब्रेड एंड बटर था उनका. एंड इसकी मैथ भी बहुत सिंपल है, थोड़ी सी फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, एंड दैट्स इट. तो अगर इस टाइप की ऑडियो आपको रेंडर करनी है कि
यहाँ पे जो लड़का बैठे हैं उसके फोन बजेगा, मुझे कैसे सुनाई देगा। वो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इस 3D स्पेस की अकूस्टिक्स को मॉडल करने का, वो बहुत सिंपल है। सिंपल अकूस्टिक मॉडल्स को लगा के आई कैन क्रिएट कि अगर सोर्स यहाँ पे है तो यहाँ कैसे सुनाई देगा, या फिर सोर्स वहां पे है तो यहाँ क्या सुनाई देगा। बस ये सिमुलेट किया था मैंने इन दीज लार्ज लैंग्वेज, इन दीज लार्ज 3D एनवायरनमेंट्स। एंड उसके बेसिस पे वो डेमो जिसमें आप कुछ भी सुन सकते हैं जैसे आप रियलिस्टिकली सुनेंगे। एंड उसके बाद थोड़ी सी डीप लर्निंग लगाई थी कि विजन को कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स करके, विजन के नेटवर्क्स होते हैं उनसे पास किया, ऑडियो को एक डिफरेंट तरीके के नेटवर्क से पास किया, और उसके ऊपर कुछ न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स लगा दी। ये सब भी बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक है। एंडी कार्पथी का एक कोर्स है आई थिंक 20 दिन का, जो आप देखेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। एंड उसके बाद जो इसकी न्यूरल नेटवर्क की एम्बेडिंग्स थी, उसके अंदर वो डिस्टेंस और एंगल की जो इंफॉर्मेशन हमें रहती है कि हम आंखें बंद करके सुन पाते हैं और समझ पाते हैं कि डिस्टेंस कितना है या और कि एंगल कितना है, वही एमरजेंस एआई में भी देखी थी कि ये जो न्यूरल नेटवर्क की एम्बेडिंग्स हैं, जो मतलब एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, उसके अंदर भी वो नोशन ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल था। बस दैट इज इट। तो ये जो आपने मिस्टिक वर्जन ऑफ कि अरे फेसबुक अब फोन सुन सकता है, ये वो एक्सेट्रा, उसकी जो बज़वर्ड एआई था, उसका जो फंडामेंटल और साइंटिफिक वर्जन है वो भी बहुत बेसिक, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में देखा। एंड एक फाइनल एग्जांपल और लूंगा मैं, जिसमें ये रोबोट्स टू लर्न टू परफॉर्म चोर्स बाय वाचिंग यूट्यूब। ऐसा लग रहा है कि मतलब यूट्यूब पे बैठे हुए हैं रोबोट्स और कुछ देख के हमसे बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो वो वीडियो वहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने ही बनाया था सीएमयू और मेटा में। एंड ये भी होगा क्या? इट्स ओके, नहीं हो रहा तो बेसिकली सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे ये दो डिफरेंट टाइप के रोबोट्स हमने लिए थे। वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो नेचुरल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन है वो कर पा रहे हैं। और एक्चुअली हमने यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ही इसकी ट्रेनिंग की थी, बट ऐसा नहीं है कि रोबोट जाके यूट्यूब पे देखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो वो जो मिस्टिक एआई या बज़वर्ड एआई आप न्यूज आर्टिकल्स में देखते हैं, उसकी साइंस जो पीछे है वो काफी सिंपल और बेसिक है। और उसका आइडिया मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि ये तो मैं भी कर सकता था और आप कर भी सकते। तो हमने कुछ ह्यूमन वीडियोस लिए, और ह्यूमन वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं कि खाना बनाने वाले कुछ मिल गए वीडियोस, या फिर कोई अपने हाथ से ओरिगेमी बना रहा है। ये सारे बहुत वीडियोस, इंस्ट्रक्टिव वीडियोस यूट्यूब पे रहते हैं, उसके डेटा सेट्स भी बहुत सारे हैं। अब इन्हीं वीडियोस से अगर मैं ये इंफॉर्मेशन निकाल लूं कि कहाँ पे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद इंटरेक्ट करने में ऐसे मैं माइक्रोफोन को ऐसे पकड़ता हूँ, बस यही तो सीखना है रोबोट्स को भी। और उसके बाद वो क्या करता है कि कैसे हाथ को मूव करते हैं, उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि रोबोट्स को पकड़ने के बाद करना क्या। तो वही दो चीजें हमने अफोर्डेंसेस कहते हैं इनको टेक्निकल टर्म में, कि अफोर्डेंसेस इज कि हाउ यू विल इंटरेक्ट विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमने वो अफोर्डेंसेस ह्यूमन वीडियो से सीखी और वो यूट्यूब से निकाले, और वो हमने ट्रांसफर कर दी रोबोट्स के ऊपर। तो हमने ढूंढा कि कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, कि कहाँ पे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं और पकड़ते हैं चीजों को, और उसके बाद वो कहाँ ले जाते हैं अपने हाथ को, और उस पूरी चीज को हमने प्रेडिक्ट करा एक ऐसे फ्रेम से वीडियो के जहां पे ना ही ह्यूमन हैंड है ना ही कोई रोबोट हैंड है। और इस सिंपल चीज को हमने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रेडिक्ट करने का एक मॉडल बना दिया कि अब मैं आपको कोई नया एक सीन दे दूं जिसमें 4-8 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे एक हीट मैप कि कहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट लेगा और उसके बाद वो उस कॉन्टैक्ट के बाद क्या करेगा। उस सिंपल चीज का विजुअलाइजेशन यहाँ पे कि ये डस्टबिन में ये कॉर्नर पे ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, दैट इज द हीट मैप, एंड जो एरो है दैट टेल्स यू कि आफ्टर इंटरेक्शन वो ह्यूमंस यूजुअली क्या करते हैं उसके साथ। और वैसे ही ये सॉस पैन है, उसका जो ढक्कन है हम उठाते हैं और वो भी ये मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता है। फिर इसी मॉडल को हमने रोबोट के ऊपर लगा दिया कि भाई रोबोट भी तो सेम ह्यूमन की जैसी सीन्स देखता है, उसको भी सेम प्रायर्स, ये जो हम कोई रूम में पहुंचते हैं और हमें एक प्रायर्स होते हैं ना कि हम क्या चीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वही प्रायर्स हमने रोबोट को भी दे दी। एंड उसके बाद वी डिप्लॉयड दीज एंड इट वाज एबल टू प्रेडिक्ट कि कहाँ पे इंटरेक्ट करना है। ये एक कंप्लीटली अनसीन किचन है एक्चुअली कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का ये।
और वो रोबोट वहां पे जाता है, वो प्रेडिक्ट करता है कि क्या इंटरेक्शन ट्रैजेक्टरी होगी और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। बस ऐसे ही बहुत सारे इंटरेक्शन वीडियोस हमने इन द वाइल्ड, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे जाके ट्राई किए, एंड जो ह्यूमन परसेप्शन है वो ये रोबोट्स के पास भी आ गया। तो ये साइंस है जो मैंने आपको समझाई, और आपको इंट्यूटिवली होपफुली थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई। बस वही उन्होंने बज़वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो ओवरऑल एआई जो है, जिसके 3 एग्जांपल्स मैंने दिए, एक जो चैट जीपीटी वाला सब लोग थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, और 2 मेरी खुद की रिसर्च है। उनका एक बज़वर्ड एंगल है, एक फ्लैशी एंगल है, और एक साइंटिफिक एंगल। और आप और मैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस साइंटिफिक एंगल को समझने की और प्रोपोगेट करने की और एडवांस करने की। और जो मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए उसमें कुछ 50% इंट्यूशन तो आपको भी समझ में आ गया होगा 15 मिनट में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना कितना ही आसान है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको अप्रोच करें फ्रॉम अ साइंटिफिक वे। एक छोटा सेक्शन मैं रखना चाहता था फॉर हायर स्टडीज, तो मैं थोड़ा सा गियर्स शिफ्ट करूंगा, एफएक्यू सेक्शन में जाऊंगा। अपने खुद के एफएक्यूज मैंने क्वेश्चंस को आंसर किया है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने सोचा कि सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्रोच एआई स्टडीज की, मतलब स्टडीज एआई की और कोर्सेज किस तरीके से अप्रोच किए जाए, समझे कैसे एआई को। और फिर जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि हम एआई को एडवांस कैसे करें। तो ये दोनों चीजें थोड़ी अलग हैं। एक है कि हम एज ए स्टूडेंट कैसे एआई को समझते हैं, और दूसरा ये है कि हम एआई के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते कैसे हैं थ्रू रिसर्च। एंड मल्टीपल लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, अरे तुमने मास्टर्स किया या फिर पीएचडी करें, हम किस तरीके की हायर स्टडीज को परस्यू करें। तो उसका एक थंब रूल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली एक वन साइज फिट्स ऑल टाइप का यहाँ पे मैं एक चीज बता सकता जिससे सब लोगों का क्वेश्चन आंसर हो जाए, लेकिन एक थंब रूल देने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू अप्रोच एआई स्टडीज। एआई स्टडीज की एक कुछ फंडामेंटल, जिसे मैंने आपको समझाते वक्त कुछ लीनियर अलजेब्रा या इंपल्स रिस्पांस के टर्म्स यूज किए, थोड़े बहुत जार्गन्स थे, लेकिन अब वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए हो। ये आप अपने कोर्सेज से सीख सकते हैं, क्लास में सीख सकते हैं। अगर क्लास हमारे पास 2015 में आईआईटी कानपुर में भी सब चीजों की क्लासेस नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो सीख नहीं सकते। तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। ये कोर्स है जिससे मेरी फियांसे जो बायोलॉजी में है उसने मैथमेटिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीखा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के बिना मशीन लर्निंग नहीं समझ सकते। तो वो बायोलॉजी में लगाना चाहती थी मशीन लर्निंग को, लेकिन जो मैथमेटिकल इंसाइट है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली नहीं होता। तो वो बेसिक्स को समझने के लिए उसने ये कोर्स यूज किया था। मैंने उसकी एक स्नैपशॉट ले ली थी और आपको बता रहा हूँ कि अगर वो बायोलॉजी के स्टूडेंट सीख सकते हैं तो आप तो इंजीनियरिंग के लोग हैं, आप भी वो बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हैं। उसके बाद ये याद रखना है कि जो मशीन लर्निंग के बेस्ट कोर्सेज हैं वो एक स्कूल में तो कहीं नहीं है। एमआईटी के अंदर भी हर चीज का मशीन लर्निंग का बेस्ट कोर्स तो नहीं है, तो आप बेस्ट कोर्सेज को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल ऐसे थ्रेड्स हैं जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि बेस्ट कोर्स इन मशीन लर्निंग कौन सा है, बेस्ट कोर्स इन कंप्यूटर विजन कौन सा है जो मशीन लर्निंग फॉर इमेजेस है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो चैट जीपीटी को एनेबल करता है, उसके बेस्ट कोर्सेज कौन से। और सब ओपन सोर्स इसलिए हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स पीपल टू हैव एक्साइटमेंट फॉर एआई, क्योंकि उसी से पीएचडी स्टूडेंट्स उठ के निकलेंगे, उसी से रिसर्च आगे बढ़ेगी, उसी से उनकी ग्रांट्स अच्छी आएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ पेवॉल के पीछे होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ फ्री और ओपन सोर्स है। फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन डीप लर्निंग। अब मशीन लर्निंग सिर्फ मैथ से नहीं होती, अब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग करके एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टूल्स हैं उससे होती है। और जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको आज वो उसी के ऊपर है। तो अगर डीप लर्निंग के बारे में कुछ ऐसे मिस्टिक एक अननोन ऐसी चीज लग रही है, वो भी बहुत सिंपल है। कोलैब करके गूगल का एक प्रोडक्ट है, वो डीप लर्निंग के मॉडल्स को आपके वेब ब्राउजर में ही चला देता है। वो फ्री है सबको, स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत सारा क्रेडिट्स मिलते हैं। उसमें आप कोलैब नोटबुक्स बना के, और अवेलेबल है सारी कोलैब नोटबुक, आप बस एंटर करके प्ले करेंगे तो हर चीज आपके लिए ट्रेन कर देता है। उसके थ्रू आप हैंड्स ऑन डीप लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वो जरूरी है क्योंकि आपको अगर इंडस्ट्री में भी अप्लाई करना है या एकेडमिया में अप्लाई करना है, डीप लर्निंग के बिना अब मशीन लर्निंग नहीं होती। एंड फाइनली टीच अदर्स। मैंने टीचिंग अपने दोस्तों की फेलियर ना केएफ ना लगे तो उनको भी पढ़ाया है, बाकी एज ए टीचिंग असिस्टेंट भी पढ़ाया है। जब आप किसी और को समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को क्लियर होती है। तो अगर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं या किसी दोस्त को हेल्प कर सकते हैं कुछ समझाने के लिए, एक दूसरे को आप पीयर स्टडी कर सकते हैं। इससे मैंने बहुत सीखा। फाइनली ऐसे ही रिसर्च को अप्रोच करने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। आप मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू रिलेटेड पेपर्स को ढूंढ सकते हैं अपनी फील्ड के जिसपे आप समझना चाहते हैं, और उन्हीं पेपर्स को देखें जिनका कोड अवेलेबल है, जिससे कि आप उसको ट्राई भी कर सकें बहुत इजीली। उसके बाद
उसमें बॉटलनेक्स को अप्रोच करें कि मोस्ट पेपर्स में यूजुअली ये मेरा पेपर है, मैं खुद ही बता देता हूँ कि मेरे मेथड की सबसे मिस्टेक्स क्या हैं, जिससे कि लोग उसके ऊपर फॉलो अप करें और समझें और उस रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो ये क्विकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं रिसर्च में, एंड उन बॉटलनेक्स को आप अपने मेंटर्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद तो नई चीज को अप्रोच करना मुश्किल है। डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत अच्छी फैकल्टी है रिसर्च के लिए, और बहुत इंटर्नशिप्स के थ्रू मैंने बहुत सीखा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आर इनवाइटेड, नॉट जस्ट इन IITs एंड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। CMU जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कोलैबोरेटिव काम करता हूँ, वहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूट, एक समर प्रोग्राम है RISS करके, जो हर जगह से लोगों को इंटर्नशिप से भी हाईलाइट करता है, और उनका पुश ही रहता है कि इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, कि हम हर जगह के लोगों को लेंगे और डिफरेंट अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज को भी आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, और मेंटर सिर्फ अपने आसपास ना ढूंढें, कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। मैंने 2 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मेंटर किया था जब मैं PhD के अंदर था, तो हमने 2 अच्छे पेपर्स लिखे रिसर्च के। एंड प्रोटोटाइप करें अपने सॉल्यूशंस को, अपने मेंटर्स को दिखाएं कि मेरा बेसिक आंसर ये आ रहा है, वो आपको और एडवांस करना सिखाएंगे। और फाइनली इन पेपर को जरूर पब्लिश करें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एज अ स्टूडेंट सिर्फ ग्रेड से नहीं आती। जब आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ क्रेडिबल थर्ड पार्टी वैलिडेशन दिखाना पड़ेगा, और वो रिसर्च पेपर से बेटर कोई नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आप जो टॉप टियर हाई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं, वहाँ पेपर्स छापना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे पेपर्स पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी कुछ एक थोड़ी आर्ट होती है ऑफ अप्रोचिंग दीज प्रॉब्लम्स। अगर वहाँ नहीं भी तो उन्हीं वेन्यूज में टाइनी पेपर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ICLR है, वो मशीन लर्निंग की वन ऑफ द टॉप कॉन्फ्रेंसेस है, लेकिन वहां पब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। लेकिन एट द सेम वेन्यू दे हैव अ इनिशिएटिव कॉल्ड टाइनी पेपर्स। वो प्रमोट ही करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी से पेपर पब्लिश कर रहे हैं, या जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कंप्यूट की मेटा लेवल पे, वो भी अच्छे पेपर्स लिख पाए। और ये टाइनी पेपर्स या ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहां पे आप 0 से 1 क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कि मेरे पास कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं था वर्सेस एक पीयर रिव्यूड मेरे पास पेपर है एट अ रेप्यूटेड वेन्यू, जो US के स्कूल्स या फिर UK के स्कूल्स या इंडिया के स्कूल्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो दैट वाज द FAQ सेक्शन ऑफ हाउ टू अप्रोच स्टडीज, ये प्रिंसिपल तरीके से, एंड हाउ टू अप्रोच रिसर्च इन AI। एंड 2 बस छोटी सी स्लाइड्स है मेरी वेन टू MS और वेन टू PhD के ऊपर। इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस ले सकते हैं कि जब आप मास्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि यू आर ट्राइंग टू शार्पन एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि कुछ स्किल्स हैं वर्ल्ड को नोन, कि भाई थोड़ी डीप लर्निंग है या मैथमेटिक्स है या कुछ, उसकी स्किल्स को आप शार्पन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो साइंस अभी एग्जिस्ट करती है उस साइंस को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। At the end of the masters, you will have a technically rich understanding of science, and you will be able to find a job जो हो सकता है थोड़ा और कोर हो, थोड़ा और टेक्निकल। फॉरेन स्टडीज MS की बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह फेलोशिप्स और सपोर्ट नहीं रहता, लेकिन भले ही वो कितने भी लाख की एक्सपेंस क्यों ना हो, वो इकोनॉमिक डिसीजन है, क्योंकि उसके बाद जो जॉब मिलता है वो उससे डबल का मिलता है। तो आप जो गेटवे है, थोड़ा सा फायरवॉलिंग है, वो काफी प्रैग्मेटिक है। अगर आप थोड़ा सा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मास्टर्स को अनफंडेड तरीके से किया था, खुद से फंड किया था, एंड इमीडिएटली 1-2 साल में वो उस लोन को चुका पाए थे। तो इससे द इकोनॉमिक्स ऑफ मास्टर्स मेक सेंस इवन दो इट इज एन एक्सपेंसिव डिग्री, एंड आपको थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे कानपुर में जो मैंने रिसर्च की थी, वो तो एक पूरे साल मैंने रिसर्च की थी मेरे मास्टर्स में। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे फॉरेन स्टडीज में पर्टिकुलरली एक कोर्स इक्विवेलेंट की रिसर्च होती है सिर्फ, वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिसर्च करना चाहते हैं। ये हो गया MS। अब PhD से बहुत अलग है। PhD आपको अंडरस्टैंड साइंस की जगह एक्सपैंड साइंस करने में इंटरेस्ट है तो करनी चाहिए। मुझे ये मन था कि ये AI की अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको और कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, जो चीजें समझी नहीं थी उनको कैसे समझ सकता हूँ। तो PhD उसके लिए करें। PhD अगर आपको और कोई अच्छा टेक्निकल जॉब चाहिए मेटा में या फिर कहीं और, उसके लिए ना करें। PhD करनी चाहिए फॉर अ रिसर्च साइंटिस्ट रोल, कि आप वही एक्सपेंशन ऑफ साइंस को आइदर कंपनी में कर रहे हैं या एज अ प्रोफेसर कर रहे हैं। अब फॉरेन स्टडीज PhD की बहुत इनएक्सपेंसिव है, कोई आपको खुद से पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। तो भले ही वो लगे कि इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इट इज नॉट एन इकोनॉमिक डिसीजन, तो आप उसको पैसे के लिए ना करें।
PhD should be done only for passion of science. क्योंकि उन 5 सालों में आप मास्टर्स के बाद, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मास्टर्स के बाद ग्रेजुएट होके बहुत कुछ अर्न कर लिए जितनी देर में मैं PhD ही खत्म कर रहा था। तो ये याद रखें, भले ही PhD फंडेड है, उसका गेटवे टू एंट्री इकोनॉमिकली चीप है, लेकिन वो खुद एक इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं है। वो इकोनॉमिक्स के लिए ना करें, वो रिसर्च के पैशन के लिए करें। एंड उसमें सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च है, उसमें कोर्सेज और ये सब तो सेकेंडरी है। उसमें आपका पूरा पर्पस ही ये है, हाउ टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। सो ये एक फिगर है मैंने उठाई थी, इसको बस समराइज करता है कि आपने हाई स्कूल में कुछ चीजें सीखी, आपने अंडर ग्रेजुएशन में कुछ चीजें सीखी, फिर आप नहीं हाई स्कूल में कुछ चीजें सीखी और एलिमेंटरी स्कूल में कुछ सीखी, फिर अंडर ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो आपका एक थोड़ा सा बम्प आ गया कि उस एक डायरेक्शन में आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर है, और ये पूरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, पूरी ह्यूमन। फिर आपने मास्टर्स किया थोड़ा सा, तो आप थोड़े से उस फील्ड की तरफ और चीजें गैदर करना शुरू किए, और आपने कुछ बहुत सारे पेपर्स पढ़े तो आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हुआ मास्टर्स या फिर थोड़ा इन डेप्थ मास्टर्स। लेकिन जो एज है, जहां तक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर आप लगे रहे और उसके बाद आप एक टाइनी बम्प उस अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव किया, वो आपकी PhD। तो जो साइंस है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आप मास्टर्स में भी गैदर कर सकते हैं, लेकिन उस साइंस की अंडरस्टैंडिंग को अगर आपको एक्सपैंड करना है बाय अ स्मॉल अमाउंट, इवन वो स्मॉल बाकी दुनिया को जरूर लगती हो, लेकिन आपके लिए वो ये आपने एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन AI या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साइंस की अंडरस्टैंडिंग 2x इंप्रूव कर दी। ऐसे ही वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं, ऐसे ही AI के टूल्स डेवलप हुए हैं, ऐसे ही जो मैनुअल राइड कार्स थी अब ऑटोमेट हो रही हैं, ऐसे ही PhD के थ्रू ये एडवांसमेंट्स हुई हैं। PhD इज अ क्वांटम फॉर एडवांसमेंट इन साइंस, तो आप उसी के लिए करें, और बहुत सारे होपफुली कुछ लोग होंगे इंटरेस्टेड जो इस चीज को परस्यू करना चाहेंगे। ओवरऑल टू समराइज, मैंने आपको ये गिमिकी फोटो दिखा के 2 साइड्स ऑफ AI के बारे में बताया, एक जो बज़वर्ड AI है और जो फ्लैशी AI है, जो कॉमन मैन समझ सकता है, जो टेक्निकली नहीं भी समझता है चीजों को, और एक साइंटिफिक साइड है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसके 2 साइड समझाए, वन इन ChatGPT स्टाइल लैंग्वेज साइड, वन ऑन ऑडियो विजुअल नेविगेशन एंड वन इन रोबोटिक्स। उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट कि AI की स्टडीज को कैसे अप्रोच करें, कैसे उसकी मैथ समझें, उसकी फंडामेंटल्स को समझें, और कैसे उसकी रिसर्च को आप पब्लिश कर सकते हैं या उसको कैसे अप्रोच करें। एंड फाइनली आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ हायर स्टडीज, मास्टर्स और PhD के बीच में, एंड जो 2 ऑप्शंस के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड थोड़े उसके थंब रूल्स मैंने आपको शेयर किए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हर इंसान पे अप्लाई करती है और ना ही करनी चाहिए, लेकिन होपफुली दिस गिव्स यू सम गाइड रेल्स टू होल्ड ऑन टू एंड अप्रोच दिस space of AI. Hopefully with that I've been able to demystify a bit of the space of AI and higher studies to you. As I said, मैं भी यहीं का हूँ और कुछ बहुत आप लोगों से अलग नहीं हूँ। कोई भी क्वेश्चंस हो आपको, आपके खुद के कुछ डाउट्स हो, आप हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हो, या जो मैंने समझाया उसमें कुछ चीजें ना समझ में आई हो, तो फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस। मुझे टाइम का आइडिया नहीं है, जल्दी से बताएंगे, लेकिन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ, और आई एम आल्सो अराउंड कैंपस में ही हूँ, आप मुझसे भी मिल सकते हैं। Any questions? We can take 2 questions, I think. Any student want to ask question? Yes. Hello. Good afternoon, sir. So my name is Pauresh Gupta, a 3rd-year student pursuing Bachelor's in Computer Science, specializing in AI MLTL. So my question is that AI is a vast field, you know, and me as an AI enthusiast, whenever I find technologies that are fascinating and intriguing my interest, I sum up my all motivation and discipline and just dig into learn that technology. But the moment I start, I found that somewhere in the world, people have already developed another AI tool that is outperforming the technology. And this sometimes leads me the loss of motivation to learn that technology. And my question is just this: what valuable advice you can give me
to overcome this and how to keep myself fired up? Actually, I'll take an unorthodox approach. अगर कोई और questions भी हैं, तो how about you channel all of them and I try to answer them in a cohesive manner कि साथ में कुछ questions को answer कर दूँगा. That way I can take more questions. But I got the question and I'll get to it. Good morning, sir. My name is Tanishq Khan. I am currently pursuing BTech with specialization in computer science. And my question is, like, we all see AI and machine learning, and it's very fascinating. But there are still some ethical concerns regarding large language models. And how can we ensure that this development of AI is always prioritizes the transparency and social impact? Thank you. Good morning, sir. So my name is Ujjwal Jain, and I'm pursuing my BTech in computer sciences, specializing in artificial intelligence itself. So basically, first of all, I was about to ask you some questions regarding the studies abroad, but most of my questions were solved in the PPT itself. So I will not be asking the same questions to you. But my basic question is, as this Dwivedi sir told us before, you were planning to do UPSC and you want to go over there. And as well as when you were telling things to us, at that particular time, you told us about one thing that was AI, and basically you have that conclusion. I have studied your profile before when you came over here. So I just want to ask, what's your basic perspective about coming technologies towards AI, deep learning, and computer vision? That's my question, because most of the questions are covered in the PPT itself. So thanks so much. We have to keep pace with the time. We can add on one question only. Good morning, sir. Myself Arnav Shail, and I am from BSc Animation first year. Sir, my question is, like few days before, I saw a video on YouTube in which Elon Musk was saying it is the starting of a horrible future. Right now, I'm doing the graphic designing, so everyone says AI will take your jobs or all these things. Then, what will you say about that thing when Elon Musk say it's the starting of a horrible future? Thank you, sir. चार क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे. एक है कि हाउ टू अप्रोच अ फील्ड जो इतनी जल्दी, कैन एवरीवन हियर मी? एक फील्ड इतनी जल्दी बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम कुछ भी करने से बैठते हैं जब तक वो फील्ड आगे बढ़ चुकी होती है. एथिकल कंसर्न्स हैं, कहाँ फील्ड आगे जाएगी और एलॉन मस्क क्या बोलता है. तो एलॉन मस्क के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव इन सारे देने की कोशिश करूंगा. मैथ हमने पढ़ी थी, राइट? बहुत एंथू से पढ़ी थी मैथ. जेई की मैंने पढ़ाई की थी, तब तो मैंने इंटीग्रेशन को भी ऐसे रीमन तरीके से बिल्कुल सब कुछ समझने की कोशिश की. वो तो कब से करा हुआ, तब भी एक पैशन आता है, राइट, टू अंडरस्टैंड समथिंग जो इंटरेस्टिंग है. भले ही आप एडवांस ना भी कर पाए, मैथ को कहाँ एडवांस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम तब भी उसको बहुत एंथुसियाज्म से पढ़ते हैं. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स. तो फर्स्ट लर्न एआई फॉर द पैशन टू अंडरस्टैंड इट. भले ही तुम एडवांस ना कर पाओ, मैं एडवांस ना कर पाऊँ इमीडिएटली, ठीक. देन अब पेपर्स जो आ रहे हैं वो वेल रिसोर्स्ड ग्रुप से आ रहे हैं, या बहुत 20 आप तो कुछ पेपर्स हैं, हजारों ऑथर्स हैं. अब उस स्केल की रिसर्च हम ना भी कर पाए. मैंने भी अपना पहला पेपर सीवीपीआर में नहीं लिखा था, जो कंप्यूटर विजन की टॉप कॉन्फ्रेंस है. मैंने पेपर लिखा था सीआरवी में, कानपुर से बैठ के लिखा था, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, मैटलैब में कोड किया था. तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं. तभी मैंने टाइनी पेपर्स का एग्जांपल दिया. मैंने ये नहीं बोला कि सीवीपीआर में पेपर पब्लिश करो. अगर बहुत सारे वेन्यूज हैं जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, या टाइनी पेपर्स का एग्जांपल है, जहाँ पे दे आर मच मोर कंसिडरेट टू फर्स्ट टाइम ऑथर्स, कि वी वुड नीड टू गिव प्लेटफॉर्म्स टू सच पीपल, तभी तो वो एडवांस रिसर्च कर पाएंगे. सो डोंट बी डिस्करेज्ड बाय द फैक्ट कि मैं वो नहीं कर सकता जो ओपन एआई कर सकता है या मेटा कर सकता है. हम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन हल्के हल्के हम ग्रो करते हैं. तो यूज स्टेपिंग स्टोन्स, टाइनी पेपर्स, वर्कशॉप्स, एंड देन स्टे एट इट. कभी कभार ऐसा होता है कि the smartest people or busy people have moved on from a field, but there are very interesting problems still lying there. And you don't have to publish papers to prove to all humanity कि तुमने कुछ नया किया जो सबके लिए useful. If 3 reviewers in a conference can agree कि ये interesting एक perspective है, काफी बार हमें नई चीज बनानी भी नहीं पड़ती. जो exist अभी जैसे large language models हैं, वो तो कोई यूनिवर्सिटी ट्रेन नहीं कर सकती. तो वो क्या कर रहे हैं, वो vulnerabilities find out कर रहे हैं, ethical concerns find out कर रहे हैं large language models.
मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने, मैं पिवट करूंगा, पिवट, तो ये क्वेश्चंस ब्रिंग अप किए एथिकल कंसर्न्स के। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज 2+3, तो वो बोल देते हैं 5। फिर उनको बोला जाता है, कभी मेरे एक दोस्त ने पेपर लिखा है इसके ऊपर, उसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बोलो इमेजिन यू आर अ ब्लैक पर्सन इन यूएस एंड देन दे आस्क्ड, तो एक पर्सोना एलएलएम ने पिकअप कर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने पिकअप कर दिया कि अब वो ब्लैक की तरह आंसर करेगा। फिर उनसे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे तो एक्यूरेसी कम हो गई, सेम क्वेश्चंस, which raises the ethical concern कि they assume कि blacks in the US don't have as good a mathematical understanding as maybe a white person. अगर आप डायरेक्टली पूछोगे कि would a black person answer 2+3 = 5, तो LLM मॉडल बोलेगा yes it will answer 5. बट अगर आप उसको पर्सोना के थ्रू देखेंगे तो वो एथिकल कंसर्न्स हाईलाइट होती हैं, और हमें इनको हाईलाइट करना चाहिए। वी कैन नॉट श्रग देम असाइड कि हाँ कुछ हो नहीं रहा। सारे स्टार्टअप्स, उबर ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनीज जो अभी एस्टैब्लिश हुई हैं, उन सब लोगों ने कुछ गलतियां की हैं ऑन द वे। दे मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, एंड इट इज आवर एज एकेडमिक्स, एज प्रिंसिपल रिसर्चर्स, एज अ साइंटिफिक बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उनको होल्ड इन चेक करें। इसलिए यूएस हर जगह गवर्नमेंट लेवल पे लिटिगेशंस आ रही हैं टू प्रोटेक्ट कि कैसे एआई एडवांस हो रही है, अलाइंड है या नहीं, सुपर पावरफुल हो रही है या नहीं, एलॉन मस्क कहीं उसकी रेड ना लगा दे, एंड सो। तो डेफिनेटली देयर आर एथिकल कंसर्न्स एंड नो वन इज शाइंग अवे फ्रॉम देम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने चूज किया है कि अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ओपन सोर्स नहीं करेंगे, कि अपनी ही प्रोप्राइटरी डेटा बिल्ड करेंगे। लेकिन मेटा और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और अपने बेस्ट मॉडल्स को ओपन सोर्स कर रहे हैं, जिससे कि तुम और मैं, हम लोग उनको ट्राई कर सकें, उनकी गलतियां ढूंढ पाए, जिससे कि वो उसको इंप्रूव कर पाए। साइंस कभी भी किसी एक कंपनी ने नहीं लीड करी। बेल लैब्स थी कभी एक समय पे जो लीड कर रही थी, सारे आइंस्टाइन से जैसे लोग भी वहां पे काम कर रहे थे। अब बेल लैब्स कोई नहीं जाता। ऐसे ही कभी नोकिया थी, फिलिप्स थी, सब आके जा चुके हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज और एकेडमिया हर समय रहता है, सालों से चला आ रहा है पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो ओपन साइंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर रियल साइंस एंड सिक्योर साइंस। एंड तभी हम लोग यहाँ पे ये सारे पेपर्स जो मैंने लिखे हैं, इसकी कोड अवेलेबल कराता हूँ, ओपन सोर्स करता हूँ, एंड सब लोग करने चाहिए। कुछ कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो कुछ प्रोप्राइटरी डेटा बिल्ड करेंगे, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ये लगता है कि वो कंपनीज कुछ सालों में मे बी उस पॉइंट पे रहेंगे नहीं कि वो they have the market advantage. So ethical concerns are real. We are all analyzing it. We should keep analyzing it and showing the vulnerabilities of AI. Don't feel scared about if you are not being able to change the face of AI. We didn't change the face of mathematics and still we enjoyed doing mathematics, right? That's why we are here. We are interested in science and so on. So make a small impact, then you'll make a bigger one. And everyone, including the top professors of an Indian background in the US or anywhere else, have started small. Including I don't even consider myself to be a top researcher, and even I have started small. And Elon Musk, so मैं पता नहीं, लेकिन the question on where the field is going and automation of jobs, and I'll touch to that through the automation of jobs करके। आई थिंक ये पहली बार है जब जो व्हाइट कॉलर लोग हैं उनके जॉब्स जा रहे हैं। जॉब्स तो ऑटोमेट कब से हुए जा रहे हैं, राइट? कि हमारे रिक्शा वाले की जगह हम ऑटो ले आए, राइट? जॉब्स बिकम लेस मैनुअल, मोर ऑटोमेटेड एवरी जनरेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लेकिन एजुकेशनल रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया था। अब तक हम कोड कर रहे थे, हम या फिर डेटा एनालिटिक्स के जो मैक्रोस लिख रहे थे एक्सेल में टू क्रिएट सम स्प्रेडशीट्स एंड सो ऑन, अब वो ऑटोमेट हो गए। इसका मतलब ये है कि हम कुछ और ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे गूगल ने अभी एक म्यूजिक टूल बनाया है, वो म्यूजिक के बेसिक चीजों को वो जनरेट करते थे। तो जो अब म्यूजिक कंपोजर्स हैं वो बेसिक यूनिट से शुरू कर रहे हैं, एज अपोज टू कि अरे वो पूरे गिटार की स्ट्रमिंग भी खुद से रिकॉर्ड कर। ऐसे ही मैं अब कोड लिखता हूँ, मेरा कोड लिखना ऑटोमेट हो गया है, लेकिन मैं रिडंडेंट नहीं हुआ। अगर मैं क्रिएटिवली चीजें कर रहा हूँ तो वो जॉब्स हर समय सिक्योर है। बट क्रिएटिविटी की डेफिनेशन जरूर बदलती जा रही है। क्रिएटिविटी कभी एक समय पे घड़ा बनाना भी था, अब घड़ा बनाने के लिए मशीन्स आ गए। वैसे ही डिजाइनिंग भी कुछ हद तक अब और क्रिएटिव हो पाएगी, क्योंकि बेसिक्स फ्रीली अवेलेबल होंगे बाय ऑटोमेशन। तो एवरी जॉब नीड्स टू चेंज विद रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, and they have always changed. It's the first time that you and I, as the elite brass of academia of science, हमारे अब जॉब्स थोड़े से ऑटोमेट होने लगे। तो इसलिए हमें थोड़ा हेजिटेशन ज्यादा हो रहा है, बट ऑटोमेशन तो हर जगह हर समय ही रहता है, एंड इट्स समथिंग टू बी एम्ब्रेस्ड।
अगर सेल्फ ड्राइविंग हो रही है तो हम ज्यादा दूर जा पाएंगे, राइट? तो और कुछ हद तक सेल्फ ड्राइविंग हो रही है तो भी हम ज्यादा दूर जा पाएंगे क्योंकि हमारा कॉग्निटिव लोड कम हो जाए. Overall, if you are doing creative work, which you all should be doing, there's nothing to be scared when it comes to automation through AI. That's my gist of it. Thank you so much, Dr. Unnat Jain. We are really fortunate to listen to your very worthy and valuable lecture. Indeed, the cooperation shown by students while listening to you with full dedication shows that yes, you have given very valuable points to our students and researchers, and we would also like to be connecting with you again in future. Thank you so much, sir. Now on the note, let me take up an opportunity to brief about our next expert, Dr. Prabhakar Tiwari. Our technical team, I request, kindly check whether the sir has connected or not. Okay. Dr. Prabhakar Tiwari, he has a bachelor's degree in electrical engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, and he is also a proud alumni of IIT Delhi, as pursued his MTech in Power System and Engineering. He is having more than 15 years of experience in teaching as well as research. He has published more than 70 research papers in very good repute of journals, and currently he is associated with Madan Mohan Malviya University of Technology in Electrical Engineering Department as an associate professor. His major research interests are power system pricing, restructuring, stability and network analysis, grid integration, power system simulators, and many more. So, ladies and gentlemen, without ado, please put your hands together for Dr. Prabhakar Tiwari. He is a professional member of IEEE as well as member of Conference Committee IEEE UP section. Thank you so much. Welcome you, sir. Thank you. Our conference general chair, Dr. R.K. Dwivedi ji, chief guest of the event, Dr. Vikas Chauhan, guest of honor, Unnat Jain ji, our section chair of IEEE UP section, Dr. Satish K. Singh ji, the speakers on the dais, participants, and dear students, a very good afternoon. This is a great occasion that we are here seeing the 12th edition of SMART, which is one of the oldest conference of IEEE UP section. I stand before you today with a great honor and enthusiasm to address this prestigious gathering at the International Conference on Systems Modeling and Advancement on the Research Trends. This gathering serves as testament to our collective commitment in advancing knowledge, fostering innovation, and promoting collaboration in ever-evolving field of system modeling. As we delve into the intricate world of system modeling, we recognize its profound impact on the various domains, from engineering and technology to social sciences and beyond. The ability to represent complex systems in a structured and comprehensible manner is the cornerstone of the progress, enabling us to understand, analyze, and optimize processes in the ways previously through, though it was impossible. The theme of this conference, that is advancement on the research trend, highlight the dynamic nature of our work. In an era defined by rapid technological advancement, it is crucial for the researchers and practitioners to stay at the forefront of emerging trends. Our collective pursuit of knowledge and innovation is not merely an academic exercise, but the vital endeavor for all, reaching implications for the betterment of the society. Further,
The advent of cutting-edge technologies such as artificial intelligence, machine learning, and big data analytics has revolutionized the landscape of the system modeling. These tools empower us to analyze these vast data sets, extract meaningful patterns, and make informed decisions with unprecedented accuracy. However, with great power that comes with a great responsibility, and it is our collective duty to ensure that these technologies are wielded ethically and responsibly. And in this reference, though friends, I'm not the expert of this artificial intelligence, but one thing I want to point out, yesterday, many of the sessions were dedicated to this topic, artificial intelligence. So, in this reference, many people were giving the argument in favor of the artificial intelligence and others opposite to this. But one thing I want to elaborate, that artificial intelligence, that which is made from the two words artificial and intelligence. So first I want to focus on intelligence. If intelligence is good, then artificial intelligence cannot be bad. Yes, we have to ensure its proper usage. And then I would like to focus on the first word, artificial. In this artificial intelligence, the word artificial is not that artificial like artificial flowers or artificial fragrance or artificial foods. But it simply refers to the intelligence that is not made by God. It is rather made by human. It is very powerful, and there are many innovative applications where artificial intelligence has shown its presence in its unprecedented, unparalleled strength, like defense, space, medical, deep sea exploration, and many places where intelligence is required, but the environment is not human friendly. So we do not have any option, or we should not have any doubt that it is really the need of the time. Only the thing is that we need to explore and make our nation, the whole world, the leader in the artificial intelligence, so that we can defend our boundaries, we can strengthen our research and medical field, and become the leader in the world. In conclusion, this international conference on system modeling and advancement on such things is served as a pivotal platform for exchange of ideas, making collaborations, and pushing the boundaries of the knowledge. Let us seize this opportunity to collectively shape the future of the systems modeling and contribute to the advancement of the research trends that will shape our world for the generations to come. I would like to extend my thanks to the organizers of SMART 2023, especially the great efforts of Dr. R.K. Dwivedi and his team to make such an event possible since long 12 years and setting new records. Thanks everyone to listen me. Thank you very much. Jai Hind. Any questions to anyone? Thank you so much, sir.
for addressing our audience. Welcome. Any questions to anyone? No questions, sir. Thank you. Nobody has raised any questions. Thank you very much. Now I take the privilege to introduce our chief guest, Dr. Prakash Chauhan. I would like to take a moment to introduce him. He has obtained his postgraduate degree in applied geophysics from University of Roorkee and PhD in physics from Gujarat University, Ahmedabad. And prior to joining National Remote Sensing Center, Hyderabad, he was the director at Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun, since April 2018. He joined ISRO in 1991 as a scientist, and since then working for the applications of space technology, including remote sensing technology for geosciences, atmospheric and oceanic process studies, natural resources management for ocean and land resources. He initiated research activities for planetary remote sensing at the Space Application Center to study solar system objects, mainly Earth, Moon, and Mars, through Indian planetary missions. He also served as group director at Space Application Center, Ahmedabad, for Biological and Planetary Sciences Group during 2014 to 2018. He has done lead work in using the hyperspectral satellite data for Indian planetary missions such as Chandrayaan-2 and Chandrayaan-1 for lunar surface composition mapping. He had been the principal investigator for infrared imaging spectrometer instrument on board Chandrayaan-2 mission. He also led a team scientist for scientific analysis of data from Mars orbital mission. His work on Chandrayaan-2 IIRS spectrometer data has resulted to unambiguous detection of H2O and OH on the surface of the moon. His findings have conclusively established presence of water molecules at different locations on the moon. He has a lot of credits to his profile. I will be reading out some of the few ones. He has been awarded prestigious Professor P.R. Pishrotti Memorial Award for the year 2004 by Indian Society of Remote Sensing. Hariom Ashram Prerit Dr. Vikram Sarabhai Research Award in 2009. ISRO Merit Award by Indian Space Research Organization in 2010. Satish Dhawan Award by ISRS Dehradun in 2016. He has been conferred with 2023 Asia Pacific Region Excellence in Space Award on 22nd September 2023. And he has published more than 150 peer review papers in national and international journals. And currently, he is a fellow of the National Academy of Science, Allahabad, Indian Society of Remote Sensing, and Indian Social Science Academy. We are really glad to have you here with us, sir, and we request you for your kind address. Please welcome him with a huge round of applause. Good afternoon, namaskar. How are you all? How is the Josh? Hi, very good. I hope you are not tired now, huh? First and foremost, Professor Dwivedi Saab, the General Chair of this conference, guest of honor, Dr. Jain, a young budding researcher. We just heard him, and I really appreciate, the way he has explained you the concepts of artificial intelligence, its applications, and your career advices, how to do higher studies and PhDs. And of course, other dignitaries on the dais, all of you, those who are present in this meeting, first and foremost, let me thank Professor Dwivedi for inviting me here. It is always a pleasure to come back to Moradabad, my own city, so that I can meet all of you, all the way I came from Hyderabad yesterday. So thank you for this invitation, and I really feel very happy to be here in this beautiful auditorium.
of Tirthankar Mahavir University here at Moradabad. आज मैं आपको थोड़ा कहानी बताऊंगा। द्विवेदी जी ने बोला मेरे को कि चंद्रयान के बारे में थोड़ा बताइएगा, और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, चंद्रयान का लैंडिंग कितने लोगों ने देखा था? सभी ने देखा था। तो उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हो रहा था, कैसे होता है, और ये कोई 6 महीने 8 महीने में हो जाने वाला वंडर नहीं है। उससे पहले जैसा कि डॉक्टर जैन ने बताया उनकी कहानी के बारे में, जो रामपुर से शुरू हुई और IIT कानपुर, और फिर उसके बाद अभी नाउ ही हैज गॉन टू US, he did PhD. So much before even he must have even born. I started my own journey, from this very city of Moradabad. I studied here from Government Inter College in 85, 87 time frame, almost past 35 साल पहले. Then it so happened that I was looking for higher studies and I got admission into University of Roorkee. अभी वो IIT रुड़की बन गया, उस जमाने में वो यूनिवर्सिटी रुड़की था. हमारे द्विवेदी साहब भी रुड़की यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं. और जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, भले ही आपने बैचलर्स कहीं छोटी जगह से भी किया हो, आजकल तो बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, उस जमाने में इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, कॉलेजेस भी बहुत कम होते थे. तो एक लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट होता है. तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि आप कोशिश करो कि किसी ना किसी स्टेज में अपने करियर पे आप एक हायर एक्सीलेंस वाले इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की कोशिश करो. जो लेगेसी होती है, जैसे अभी जो IIT रुड़की है, ये 175 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है. 175 years of this institution has been completed. It started with Thompson College of Engineering, अंग्रेजों के जमाने के, जेलर नहीं. अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है. जब अंग्रेजों ने गंगा से, हरिद्वार से जो गंगा का पानी डाइवर्ट किया इरिगेशन कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तब उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमको सिविल इंजीनियर्स बनाने हैं इस देश में, और वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराने के लिए थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना रुड़की में की गई, जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से, जहां से कि ये गंगा नहर, अपर गंगा कैनाल जिसको बोलते हैं, गंगा का पानी आज पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कानपुर तक जाता है. और उससे क्या हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई डेवलप हुई, इरिगेशन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों का वेलबींग हुआ. तो हर इंस्टीट्यूशन की एक स्टोरी होती है, उसकी एक हिस्ट्री है. तो जब आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या एक जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, समय के साथ आपका प्रोफाइल चेंज हो जाता है, आपका करियर चेंज हो जाता है, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आपको डाइवर्स चीजें जानने के लिए मिलती हैं. वो हमेशा करने की कोशिश करो. और दूसरी एक और चीज है, अपना से दूसरे सब्जेक्ट वालों के साथ दोस्ती करना शुरू करो. आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट तो आप सब जानते ही हो, आपस में बात करते हो, आपको बहुत कुछ रोज जानने को मिलता है. लेकिन आज की दुनिया है एक मल्टी डिसिप्लिनरी दुनिया. ये दुनिया में बहुत सारी चीजें जानने के लिए चाहिए. जैसा कि जैन साहब बता रहे थे, आपको कंप्यूटर का एक स्पेशलिस्ट भी होना है, आपको बायोलॉजिकल सिस्टम्स भी पता होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी भी आनी चाहिए. दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो थोड़ा सा आपसे दूसरे सब्जेक्ट वाले हों, तो जिससे आपका रोज जो है नया नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा. तो ये 2 बड़ी सिंपल सी टिप्स हैं. और फिर आपकी मेहनत है वो आपको कहीं भी ले जा सकती है. आप कितनी छोटी जगह से भी ना निकले हो, लेकिन अगर आप कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो यू कैन एक्सेल इन द वर्क व्हिच यू आर डूइंग. These are some small things I thought before I start about this, Earth's moon journey to Chandrayaan-3 story. I would like to tell you all and motivate you all to excel whatever field you take. Either you are a computer scientist or you are an electrical engineer or a diploma holder. जो करना है उसको एक एक्सेलेंस के साथ करो और सबसे बेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो nobody will be able to stop you. Now in another next 10-15 minutes, I will tell you the story
of this wonderful mission which we did in India, sitting over in India by own Indian scientists within a beautiful organization called Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization has history of more than 5 decades. 50 साल से पुराना इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने जब इस देश में लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, तब तक वो आदमी, he was a visionary. He thought that India should have a space program, not to fight with the Americans or those days USSR people, but to have socio-economic impact of technology in this country. That was the era when there was nothing is available. Television भी नहीं था इस देश में. तब इंडिजिनसली होम ग्रोन प्रोग्राम की स्थापना की गई और आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन जो भारत का स्पेस प्रोग्राम था वो 1970 से आत्मनिर्भरता के प्रिंसिपल पे चल रहा है. We always thought that we should do everything by our own. When Russians denied us cryogenic engine एक पावरफुल इंजन होता है जो कि हाई पावरफुल रॉकेट्स में लगता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे काम करता है. When we could not get that engine, we developed that engine our own. And today in all our big missions, including Chandrayaan-3 mission, that cryogenic engine is successfully working, made by Indians and made totally in India. So that is what is the thing. And one more thing I would like to tell, that institutions like ISRO has very few people from IIT. Because IIT के सब लोग तो विदेश चले जाते हैं, तो बचता कौन है देश में? So we have less than 2% people who come from IIT background. All engineers and scientists coming smaller institutions, small colleges, NIT के भी नहीं आते, छोटे small colleges, TMU से कोई मेरठ यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कई इंद्रप्रस्था वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे वहां पर निकल के आते हैं और वो फिर देश के स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं. आज जो इसरो के चेयरमैन है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, केरला के बहुत छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन ही इज टुडे लीडिंग द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेस प्रोग्राम इन द कंट्री, डॉक्टर सोमनाथ. आप सबने नाम सुना होगा. तो ये जो चंद्रयान मिशन है, नेक्स्ट स्लाइड उसकी आप पढ़ाइए, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए. तो हमें चंद्रमा को क्यों जानना है, हम मून के पीछे क्यों पड़े हैं, मून पे क्या है ऐसा कि जो हमें पृथ्वी पे नहीं है. तो आप ये एक बहुत ही अच्छी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें अर्थ और मून ये एक सिस्टम का पार्ट है. मून जो है वो अर्थ का ही एक पार्ट है, वो अर्थ से अलग नहीं है. ये आपको एक सैटेलाइट की इमेज है जो 10 लाख किलोमीटर दूर से ली गई है. उसमें आपको अर्थ दिखती है ब्लू प्लैनेट, लेकिन मून जो उसके चक्कर लगाता है वो एक ग्रे प्लैनेट है. तो सिर्फ अर्थ और मून की दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है. तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे ही अर्थ पे जो पानी है, जो क्लाउड्स हैं, जो कलर हैं और जो मून है उस पर टोटल डिफरेंट सिनेरियो है. तो ऐसी क्या चीज है कि जो अर्थ पे है और मून पे नहीं है, तो इसलिए मून बिल्कुल अलग है. इसी की क्वेस्ट है, इसी को जानने की कोशिश है कि एक ही सिस्टम का पार्ट होते हुए मून हमसे, हमारी पृथ्वी से इतना अलग क्यों है. इसका डायमीटर लगभग 1/3 है. इसके ऊपर टेम्परेचर वेरिएशन -110 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है. बहुत ठंड, बहुत गर्मी. इसका कारण है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है. मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है. तो जब मून इवॉल्व हुआ अर्थ से ही वो बना था, और जब वो बना तो ग्रेविटी कम होने के कारण वो जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो उसको होल्ड नहीं कर पाया, और सारा का सारा एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा वातावरण है जिससे कि हमको जो है बहुत सारे फायदे होते हैं, वो फायदे वहां पर कुछ भी नहीं है. तो मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. आपको अगर वहां जाना है तो सांस लेने के लिए भी यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा. अगली स्लाइड पे चलते हैं. तो मून यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है और बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे पोएट्स ने मून को लेके बड़े अच्छे लोगों को कविताएं लिखी हैं. किसी को बोला चंद्रमुखी जैसे दिखते हो, किसी को बोला आप मून की तरह सुंदर दिखते हो, चंद्रमा की तरह दिखते हो. इस तरह की उपमाएं दी जाती है. हिंदी में उपमा बोलते हैं ना, जब आप किसी को कंपेयर करते हैं. लेकिन जब हम मून के बहुत नजदीक जाते हैं, और ये जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मून से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं उनके द्वारा ली गई है. तो आप देखोगे कि मून की सरफेस पे तो बहुत गड्ढे हैं, ये तो गड्ढों से भरी हुई है.
अब बताओ कौन बोलेगा कि मेरे को चंद्रमुखी बोलो, मेरा चेहरा तो इतना गड्ढा हो रहा है, तो किसी को नहीं बोलना है. Nobody would like to get compared with moon, because moon is not that beautiful as it looks from, from a distance. It has large amount of these small craters. तो ये पूरा का surface है वो craters से भरा हुआ है. And why there are so many craters on moon? Because there is no atmosphere on the moon. तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जितने मीटियोराइट्स हैं, जितने उल्का पिंड हैं जो हमारे ब्रह्मांड में और सोलर सिस्टम में घूमते हैं, वो मून से जाके टकरा जाते हैं और वो ये इम्पैक्ट क्रेटर्स बनाते हैं. तो बहुत तरह के क्रेटर्स हैं, छोटे क्रेटर, बड़े, बहुत बड़े, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर साइज के क्रेटर्स हैं. अर्थ पे भी कुछ क्रेटर्स बने, लेकिन अर्थ में एटमॉस्फेयर है, तो व्हेन दिस मीटियोराइट्स दे कम इनटू अर्थ सरफेस, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन created in the atmosphere, most of them they get burnt out, and hardly some of them they approach to the surface of the earth, and then they can make impacts. But there were some bigger meteorites which has hit earth surface, and there are impressions of craters on moon, on earth also, but not like moon where every centimeter of the moon surface is full of impact craters. Then you see this black and white colors, आप मून को देखते हो तो एक काला दिखता है, एक सफेद दिखता है. लोग बोलते हैं कोई बुढ़िया बैठी है, चरखा काट रही है, कुछ कहानी है, ये है, वो है. कुछ नहीं है ऐसा. एक दो तरह की रॉक्स हैं, डार्क रॉक्स एंड ब्राइट रॉक्स. सो दिस डार्क रॉक्स आर बेसिकली they have formed because of the impacts only. There was impact, they were so big कि उन्होंने मून का क्रस्ट को पंचर किया, और नीचे से जो मोल्टन मैग्मा है, जैसा आप हवाई में लावा दिखता है, वो लावा फिल हो गया ये सब क्रेटर्स में, और ठंडा होने के बाद it created a rock called basaltic rocks. This type of rocks you can see when you go to Hawaii, और आप अगर साउथ ऑफ इंडिया में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, so all this volcanically derived rocks are called basically basaltic rocks. ये सब basaltic rocks हैं, और जो ब्राइट एरिया है वो सब रॉक्स हैं जो कि लाइटर एलिमेंट से बनी है, कैल्शियम से, सिलिका से. सो दिस इज ओनली कंपोजिशनल डिफरेंस. दोनों रॉक्स हैं, एक लाइटर एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बनी है और एक डार्क हेवियर कंपोजिशन से बनी है, जहां पर लाइट जो है अब्सॉर्ब ज्यादा होती है, तो इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. तो इसी मून की मिस्ट्रीज को जानने के लिए लोगों ने 1950s से, अमेरिकन ने, रशियंस ने बहुत सारे मिशंस मून पर भेजने शुरू किए. इनफैक्ट रशिया ने, जिसका चंद्रयान 3 के साथ कंपटीशन चल रहा था, जो हमारा था, तो उन्होंने भी एक लूना 25 करके डाल दिया, और वो हमसे पहले साउथ पोल पे लैंड होना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाए, वो फेल हो गया. उन्हीं रशियंस ने 1962 में सबसे पहले जो था मून के ऊपर एक लैंडर उतारा था. 1962 में, आप में से तो बहुत सारे लोग, मैं भी नहीं पैदा हो रहा तब तो वो 62 में उन्होंने लैंडर उतारा था, और उसके बाद it was a big shock to Americans, and then American president told that how could Russia go to moon? I will send humans to moon, and then that basically led to the Apollo program. In 1969 जुलाई में first human landed onto the moon surface. क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. उसके बाद और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट लैंड हुए, उनका नाम कोई नहीं जानता है. लगभग 17 humans have landed onto the moon surface, and almost 1 truck full of moon rock has been brought back by these astronauts. So that was the importance of this lunar studies. Then when we decided to start a program for lunar studies, of course very late, sometime in 2008, 2008 में हमने पहला अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसको 2002 से डिस्कशन शुरू हुआ, और उसमें लगभग 12 देशों ने, 12 कंट्रीज बेसिकली दे कंट्रीब्यूटेड देयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन चंद्रयान 1. तो चंद्रयान 1 क्या था? वो एक सैटेलाइट था जो कि मून की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता था और मून की सरफेस का इमेजिंग करता था. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काम करते थे, अल्ट्रावायलेट से लेके एक्सरे से लेके विजिबल, एंड देन इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. वी हैव डन इमेजिंग ऑफ मून to find out various aspects of moon using our Chandrayaan 1 mission. It was a very successful mission. That mission led to the finding of water molecules on the moon surface. First time it became history कि इंडिया के चंद्रयान 1 मिशन से मून के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स का पता चला. उससे पहले लोगों को ऐसा लगता था कि मून के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं. वाटर तो छोड़ दीजिए, ऐसा जैसे हमारे नदियों में पानी बहता है, ऐसा पानी तो वहाँ है नहीं. बाद में जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वाटर मिला, उसका कंसंट्रेशन भी बहुत कम है. दैट इज हार्डली 1000 पार्ट्स पर मिलियन काइंड ऑफ थिंग.
So it's a very small amount of water molecules or water which is available on moon surface, but even that was also not known. So this is one of the biggest contribution which came from Chandrayaan-1. So Chandrayaan-1 की सफलता के बाद then there was another mission which we thought that we should start, and that was basically Chandrayaan-2. Chandrayaan-1 में हमें अमेरिकन्स के साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके। Chandrayaan-2 में जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए हमने कंसीव किया कि अभी हम चंद्रमा का चक्कर लगाया है और चंद्रयान-1 में बहुत सारे रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन हुआ। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी शुड गो एंड लैंड ऑन टू द सरफेस ऑफ चंद्रयान ऑन मून। सो Chandrayaan-2 को कॉन्फ़िगर किया गया। तो रशियंस को हमने अप्रोच किया कि हमारे पास लैंडर नहीं था उस टाइम, सो वी वांटेड रशिया टू प्रोवाइड दैट लैंडर, बट इट सो हैपेंड दैट रशियन could not provide, they did not provide their lander with Chinese collaboration failed, and then later on they backed out. They told that we cannot provide our lander. So then what is the option left? You have to develop your own lander. Then we started, ISRO people started developing our own lander system, and that is why it took so much time. When Chandrayaan-1 was done in 2008, Chandrayaan-2 basically landed, or when it was launched, it was already 2019. So it took almost 9 to 10 years for that full development of Chandrayaan-2 lander. So that many of you may be knowing that Chandrayaan-2 basically was a satellite which has both lander and orbiter. मैं उसकी कहानी बाद में बताऊंगा। उसमें जो लैंडर था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको सबको पता होगा, वो क्रैश लैंडिंग हुआ। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम फिर से मून पे जाएंगे, एंड देन दैट इज हाउ द Chandrayaan-3 concept came. And that is how we became successful later on by learning from the mistakes of Chandrayaan-3. तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि जिंदगी में फेलियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। If you fail, don't worry about failures. Failures teaches you much more than the success teaches you. That was the biggest lesson, and I will tell you what were those lessons. Next slide. अब आप कोई भी सैटेलाइट जब भेजते हो कोई बॉडी को स्टडी करने के लिए, तो सैटेलाइट तो आप भेज देते हो, लेकिन वो सैटेलाइट से डेटा भी तो अर्थ पे आना है ना। मून पे तो कोई बैठा नहीं है उसको एनालाइज करने के लिए, वहां तो there is nobody over there. So then you have to develop lot of ground based electronics, and then ground based communication system, ground based data processing, image processing system. So we have developed this deep station networks, DSN. It's a 30-meter antenna in Bangalore, which basically talks to all the satellites as far as away working around Moon or Mars orbiter mission, 225 million kilometers. Moon is only 384,000. तो इतना दूरी से वो सैटेलाइट के साथ लिंक एस्टेब्लिश करके वहां से जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको अर्थ तक लाने के लिए आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। So we have developed this deep space network in Bangalore, which basically hosts large aperture antenna systems. They can get very feeble signals in any part of the universe, and they can convert that into meaningful images. So इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें RF है, इसके अंदर आपके कंप्यूटर साइंस है, आपको एक कम्युनिकेशन इंजीनियर होना है, आपको एक डेटा प्रोसेसिंग पर्सन होना है. So many kind of people they are working for this type of system. You have this beautiful control room. कंट्रोल रूम से पूरा का पूरा आप कमांड्स देते हो, वो कमांड्स अपलोड होती है, तब जाकर मून पर ऑपरेशंस होते हैं. So this is a fantastic system which completely it works in an autonomous fashion. Next slide. तो ये चंद्रयान-1 में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैं उनकी बात नहीं करूंगा. मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि हमने वहां पर देखा क्या. जब आप मून पे जाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल सी ऑन मून. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट यू सी व्हाट इज दिस. कोई बता सकते हैं कि ये एक क्रेटर है. अब ये क्रेटर है वो जो मून के नीचे ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा, ये आप आपको अपनी आंखों से जब फुल मून है आप यहाँ से मुरादाबाद में बैठ कर देख सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटा सा दिखता है. लेकिन जब उसको 50 किलोमीटर की ऑर्बिट से हम इमेज करते हैं, then you see this beautiful pattern of this crater. You can see so much of texture there, and the width or the diameter of this crater is around 85 kilometer. तो यहाँ से लगभग दिल्ली तक चले जाओगे तो भी आप क्रेटर में ही हो, एक साइड से दूसरी साइड तक 85 किलोमीटर का क्रेटर है. और ऐसे क्रेटर्स में बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल हिल बन जाती है, और वो सेंट्रल हिल इस क्रेटर में है, वो आप देख रहे हो. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन.
जब एक मीटियोराइट बड़ा मीटियोर इम्पैक्ट करता है मून को, तो मून भी रिबाउंड करता है एंड मून की सरफेस रिबाउंड करती है। अब जैसे हम कभी किसी को बच्चे में हुआ है कि आपस में लड़ाई हो गया, किसी ने किसी के सर पे या माथे पे कुछ मार दिया, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद माथे में से एक छोटा सा बम्प निकल जाता है। So like that, मून पे भी बम्प निकलते हैं। So if there is a big impact crater or a big meteor which impacts onto the moon surface, this type of central peaks are formed, and this central peak is 2 kilometer height. And मैं इसका आपको next slide में image दिखाता हूँ. Now you look, this central peak look like this. So we have a camera which basically produce 3-dimensional images of the moon surface. ये moon का 3D image है और वो central peak बीच में है, उसका ये image है. So this looks like any normal hill. ये एक normal hill है जो कि आपको कहीं भी अर्थ पे दिखाई देगी. Only difference ये है कि इसके ऊपर कोई plantation नहीं है. There is no vegetation over here. It's all barren rocks all over the moon. So these are all the images which basically demystifies moon for you, and it tells you that moon also have landforms like the kind of landforms you have on Earth's surface. Next slide. This is a 3-dimensional image, So we do a lot of image processing. So we get these 2-dimensional images. Then we also generate 3D, third dimension by a method called photogrammetry. हमारी दो आंखें भगवान ने दी हैं, इसलिए दी हैं कि हमें डेप्थ का परसेप्शन हो. तो जब हम दो कैमरास को इस तरह से लगाते हैं एक सैटेलाइट पे कि वो एक एरिया को देख सकें, तो हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके 3-dimensional reconstruction कर सकते हैं. And using that technique, we have developed 3-dimensional topographic surface of moon and of course Earth also. And then we can wrap 2-dimensional images with this 3D data and produce these beautiful animations, which you can see over here. And then that central peak has beautiful, different type of minerals also. So यहाँ पर वो आपको pink spinels है, लोग अपनी अंगूठी में पहनते हैं, तो ऐसे ही pink spinel यहाँ moon की surface पे मिलते हैं. So these satellites basically have told us that moon has a lot of resources also. So if somehow now people are talking, Artemis program of NASA talking that we will have permanent bases on moon. So advanced countries are now trying to bring back lunar rocks and lunar resources so that they can also be exploited. So resource exploitation on moon is very one big science. And in many of you are all young people, you will see that in next 20-30 years that will become reality. Next slide. These are another beautiful images. This is a multi-ring basin. Multiple type of impact craters on moon surface. So like that, many such things we saw. Next slide. There are snake-like serpentine features on moon. But this is not a snake. This is a morphological feature called ryle, and this place is called cobra ryle because ये cobra की तरह दिखता है. लेकिन ये एक conducts है जहाँ पर lava flow होता था, जब moon पे volcanism था. So like that you have in Hawaii also a lot of lava flow features, etc., where active volcanism is there. So like that on moon also there used to be this similar type of serpentine features. Many places you will see when you go to the moon surface. Next slide. You can see this, big river type of things, but they are not river of water. They are river of volcanic material, river of lava flows, and they are there for hundreds of kilometers long. Initially, people thought that there are rivers of water, but of course, they are not rivers of water. There is no water on the moon. Next slide. So people found those, those regions like those which are shown in blue color, the areas where water molecules were found. This was found by a technique of physics called spectroscopy. So using an instrument which could do spectroscopy of water, those type of regions were found out. I will not go into technical details of that because it will take a lot of time. But basic concept is that it's basically a very simple basic principle of physics which was applied in certain wavelength region. Water absorbs sunlight, and if you can detect that absorption, you can generate those type of beautiful, compositional map of moon surface. Next slide. तो ये तो चंद्रयान 1 का मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि इसने क्या क्या पता चला, क्या देखा, क्या नहीं देखा, किस तरह की साइंस हुई. लेकिन उससे इतना एक्साइटमेंट हुआ कि नाउ विद दैट सक्सेस वी थॉट दैट वी शुड हैव ए एडवांस मिशन व्हिच वाज लैंडर, rover, and of course an orbiter. So that was the story of Chandrayaan 2. We started developing our own lander. Lander should carry a rover, and that rover was also built in India. It has its own instrumentation, and this is the total configuration where on top you have a lander, and then in bottom you have a orbiter. So this orbiter lander configuration was called Chandrayaan 2.
Next slide. And it was launched. This is the instruments, a big list of instruments to do science on moon. We will not go into details of that. All this hardware was developed in India in different ISRO labs, and it was launched eventually in the month of July 2019. Next slide. But while going to moon, it took a lot of beautiful photographs, as you can see over here. Next slide. There are a lot of craters, there are secondary craters. Next. And then we also had a camera which could see 20 centimeter objects. 20 centimeter वाली चीज भी हम मून पे देख सकते थे. So we have developed a camera called optical high resolution camera system. इसका फायदा क्या है कि जो लैंडिंग साइट है, जहाँ हमको लैंड करना है, we can take photographs of that landing site and then see what kind of undulations are there, what type of craters are there. Because if you land in a place which is irregular, your lander will topple. So you have to very carefully choose a landing site which is plain, which is very smooth, and purposefully we decided that we will go to the south pole of the moon because nobody has gone to the south pole of the moon. But south pole of the moon is also a very rugged place. It has a lot of variable topography, as you can see from this very high resolution 20 centimeter data. So using these OHRC images for many orbits, the landing site characterization was done. And then we started descending towards the moon surface, the case of Chandrayaan 2. But what finally happened eventually, there is a power descent phase. When you are 30 kilometers from the surface of moon, slowly the lander starts coming, it changes the orientation. But in case of Chandrayaan 2, when it was only 250 meters from moon surface, we lost the control of the spacecraft from the Earth. Our control center, which I showed you, stopped receiving signals from the antenna of the Chandrayaan 2 lander, which was about to descend to the moon. And then by that evening, we found out by using that same OHRC camera, we did imaging, and we found out that the Chandrayaan 2 lander has landed on moon. Moon पे landing हो गई, लेकिन वो landing क्या थी? That was not a soft landing. It was not like a helicopter. It was a crash landing. So it basically, because we lost the control, basically crashed onto the moon surface, and entire lander got dissipated into different pieces. And we could image those pieces. They were all lying around the landing site, around 500 meters away from the landing site. So it became a big disappointment. Many of you must have seen images of that day also. Our Prime Minister was also there, and then became a very heavy. I was also there in the control room. It became a very, very tense situation. But of course, handled very well by consoling people working in labs. So this was a setback, but it was a partial success because our orbiter was still orbiting moon surface, and then it was providing all those beautiful images in advanced images compared to Chandrayaan 1. Of course, it was a big setback, but that setback basically, gave us a lot of lessons. And then it was decided subsequently that we will make one more attempt, and then Chandrayaan 3 will be a mission which will be sent as a follow-on mission to Chandrayaan 2, and then we will demonstrate to the world that yes, Indians can do the landing onto the moon. But it is not a simple statement. You have to redo everything. You have to do what we call as in ISRO we call as the incident committee, or what is called the failure analysis teams. So large amount of failure analysis teams were built. They started digging into millions of bytes of data, that what exactly has gone wrong, what was the problem, how the guidance and navigation system has not worked, is there any software error, whether the thrust which was there on the engines was sufficient enough, what exactly has happened to that lander and why it failed. So such committees were formed, and then they brought out their technical details and all, and then we started working towards developing the new lander, that is called Chandrayaan 3 lander. Next slide. Okay, next. So this is how the new Chandrayaan 3 lander configuration was designed. Orbiter was dropped because Chandrayaan 2 orbiter is still working. We don't need an orbiter because you have to connect. Orbiter is required because the lander has to send signal to orbiter, and then orbiter has to send signal to the Earth. So we decided that we will use Chandrayaan 2 orbiter, and then we could reduce some weight of the spacecraft, and the lander was made more muscular, more powerful. So those configurational changes were done. Legs of the lander was made more stronger. The thrust system was made more throttlable.
And then there were a lot of navigation and guidance control sensors were built in. A lot of navigation cameras was put onto the new lander. There is one slide which tells you, next slide, that what all things were done. I will not go into details of this. So many improvements on the Chandrayaan-2 lander was done in case of Chandrayaan-3, and that all became possible because of that failure. So जिंदगी में कभी failure होता है, so it gives you temporary setback, but that failure is a very important stepping stone in your life if you analyze that failure carefully and bring out the reasons of the failure and then correct them in the next attempt. But if you keep on continue, on your mistakes, then there is no success. So we did all that. We did multiple tests. We have done a lot of simulations on ground, and then finally, the Chandrayaan-3 lander was made fit or declared fit to fly. And then, of course, rest is the history. This is the route which we took. I will not talk much about it. Next slide. And this is the power descent profile. That means when the lander has come as close as to 30 kilometers from the moon surface, normally the lander will be going in this direction. It will be going around the moon. Then it comes to 30 kilometers. It has to slowly change its orientation. And that is done by firing certain engines. There are thrust engines onto the lander itself. Slowly those thrust engines will be fired. अब जैसे आप बहुत तेजी से साइकिल चलाते हो और अगर कर्व आता है तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही आपको वेलोसिटी रिड्यूस करना है. When you are going very close to the moon surface, you have to reduce the velocity of the lander. Otherwise, lander will go and crash onto the moon surface. So to reduce velocity, space में तो velocity reduce करने के लिए ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ तो एयर भी नहीं है, तो आपके पास पैराशूट्स भी नहीं लगा सकते हैं, तो हमको वहाँ पर एक negative direction में thrust generate करना पड़ता है. If the body is moving like this, then we have to produce a counter thrust in the opposite direction, and that counter thrust will be provided by the engines which are being put onto the body of the lander, and those engines has to produce a very calculative amount of thrust so that in phased manner you reduce the velocity, and then finally you have to make the velocity zero, and then the spacecraft has to become almost vertical, and its vertical velocity has to become zero. Then it has to start descending like a helicopter, like आपको जहाँ helicopter hover करता है उस तरह से आपको नीचे आना. And then once you come close to moon surface, there are navigation cameras, कैमरा ऑन होते हैं, hazard avoidance देखना है कि नीचे craters है कि नहीं है, and if it is moving very close to crater, it has to make autonomous decision that it should shift its position and then start descending. All that autonomous thing has to happen totally in a computer-based model, because after firing those commands from here, you simply cannot do anything. Total decisions are on-board computer of the lander has to take. There is no scope of error in that, and successfully this time we were all, you all must have seen how tense those last 15 minutes. We call the 15 minutes of terror. Then it starts coming down, and you simply cannot do because all commands are loaded. Simply you have to watch the data of the terminal. You must have seen a lot of people sitting, but they were all sitting doing nothing. They were simply watching on the terminal that what kind of data is coming, what the values are, and whether those values are in the reasonable range as predicted before the the launch trajectory simulations are done. So finally, this time you all must have seen everything happened in a perfect fashion, and we had a wonderful descent, and the lander successfully landed onto the moon surface, and the entire country got erupted into joy. All of you have witnessed that. But then again, people will ask, what is the proof? Because what you were seeing was also an animation, because there was no camera over there which was recording this descent. There is nothing like that. So what you are seeing is an animation created by the data itself. And many people in the world can question that whether you have really landed or not. उसका सबूत दिखाओ. तो सबूत क्या है? Next देखिए. ये सबूत है. So we had that. Remember Chandrayaan-2 orbiter had that very high resolution camera, 20 centimeter capability. वो उस दिन 23 अगस्त को सुबह 2:28 पे उसने लैंडिंग साइट का फोटो लिया था, जो लेफ्ट साइड में है, और वो राइट साइड में रात को 10 बजे फोटोग्राफ है वो एरिया का सेम ऑर्बिटर से. तो यू कैन सी देयर इज समथिंग डिफरेंट इज देयर ना बिटवीन टू क्रेटर. जहां बॉक्स बना है वो सुबह के फोटोग्राफ में 6 घंटे बाद
एक छोटा सा चीज वहां पे आके बैठ गया, वो कुछ नहीं है, दैट वाज अवर विक्रम लैंडर, and that was the proof which was released next day that the lander has really landed, and we have done imaging of that area. And then later on, Americans have their own satellites which are going around moon surface. They also did imaging of that area, and then world declared that yes, the landing has really been successful. And once the lander lands, as you must have seen, helicopter lands, it also lifts a lot of dust. So dust ऊपर आती है because there is a thrust, and that thrust will disturb the moon surface. So moon has a lot of fine dust on that, and we wait for some time for that dust to settle. तो 2 घंटे हमने वेट किया उसको सेटल होने के लिए, and then once the lander was perfectly there on that, dust has got settled, it has got a ramp, and then ramp was deployed autonomously by firing commands here. इसमें commands देते हैं, ramp खुलेगा. ये just like it's like a very fascinating मूवी. आप यहाँ 4 लाख किलोमीटर दूर बैठ के कमांड देते हैं, वहां पर रैंप खुलता है, and that once that ramp opened, there were difficulties in opening ramps also because some sequence of command was not getting uploaded properly, but finally that technical trouble also was overcome and ramp basically opened up. And once that ramp opened up, then that rover, Pragyan rover, which is a very small tiny rover, that also rolled down beautifully onto the moon surface. Next slide. And that Pragyan rover then took the photograph of the lander. It has a beautiful camera, and then that took the photograph of the lander. So this was a proof that the lander is really there now. First you have the proof from the spacecraft, from the rover itself, and rover took the photograph of the lander. और अभी भी आप देखोगे जो लैंडर की पीछे वाली लेग्स हैं और जो आगे वाली लेग्स हैं वो प्लेन एरिया में नहीं है. There is a 6 degree tilt. Small tilt is there with the front legs and the back legs, and that is basically the most critical thing, that if you land into an area which is having more than 8 degree or 10 degree slope, the lander again will topple and then it will fall. So that is where you have to be extremely careful in site selection and identify that location, and multiple autonomous decision making is done onto the lander. So that it can safely land into a very very plain area. So this is all that photograph taken by the rover. Next slide. And then we did some analysis of that image, and then all the pink areas, what you see is the change direction. So you can detect the change, and that shows you how much dust, how much area was affected by the dust. So all the pink area what you see is the area which was affected by that dust, which basically got elevated because this lander has landed onto the moon surface. Next slide. And of course, then beautiful video of this rover coming out from the lander. All of you must have seen that how beautifully slowly the rover is coming out of this ramp, and it has the flag of India, and then the flag of India got hoisted onto the surface of the moon. Finally, rover also made a century. Rover made a century on the moon surface, as it could travel 100-meter distance onto the moon surface. 100 meters is not a big distance, but since it is a very small rover, for this class of rover, even making 100-meter traverse on the moon surface is also a very important milestone. So you can see the path which has taken, and the rover also has autonomy. You could see that rover, got very close to the crater, and that it took a decision, and then it took a turn and changed its path so that it should not go and get jump into the crater. So that type of autonomous or intelligent, thinking, what morning artificial intelligence was being described, is built in all this, in these hardware systems. I don't call it artificial intelligence. You have in the world 2 types of intelligence: the biological intelligence, which all we have, many animals have, many biological creatures have intelligence. That's called biological or natural intelligence. And the other kind of intelligence which we make this hardware to think and work in a smart fashion is called computational intelligence. You basically develop mathematical equations, algorithms, and then put into place in a computer system which is there on board. And using that computational analytics, these systems become more intelligent. So there is nothing artificial about it. There is logical about it, and that is why it is called computational intelligence. So maybe you can think of renaming artificial intelligence AI to CI.
We don't know about it. Now this rover also had a purpose. Rover had three very wonderful, sensitive instruments which provided a lot of data. They were supposed to know what kind of composition, what type of elements are there, and many of these new elements were also found using this rover data sets. Next slide. That's all. So this is the, in a very nutshell, the beautiful, wonderful story of, the Chandrayaan landing. But there are a lot of mysteries on Moon yet to be solved. And now ISRO is planning to have the follow-on of Chandrayaan 3, it will be called Chandrayaan 4. And this will be another robotic mission, which will have a much advanced robot. And the work which Dr. Jain was showing, the heat maps and all, will all go into a rover, which will basically go to Moon, and then we will have a robotic arm, and probably that robotic arm should know that where to, scoop the material from the Moon surface. Once it has scooped the material, it should be put into some bucket, and that has to be brought back to the Earth. And that all we will be planning in the Chandrayaan 4 mission. We are planning to bring roughly like some 20 kg material back to Earth's surface, and probably this mission will take another 5 years to build. And Prime Minister of India has given a lot of tasks to ISRO now, including this sample mission for next 5 years or so. So many of you, I think, can contribute to many of these programs, and space is becoming open. We have made a new space policy. There are large amount of startup companies are coming up. More than 200 startup companies in space sector are registered in India in the last 3 years itself. And a lot of young people are making their own startup companies. In fact, there is a company in Hyderabad which is having its own private rocket launch capability. So till date, only ISRO was launching rockets and making satellites, but now private entrepreneurs, young boys and girls of 20, 25 years of age, they are having these dreams to fulfill their space aspirations. And I'm sure with all of you sitting here, some of you definitely will contribute to the space program of India. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your deep knowledge about Chandrayaan 3 with us. Your remarks were full of enthusiasm and valuable knowledge. Thank you so much, sir. Now, on the note, let me take up an opportunity to call our next speaker, Mr. Mohammad Sadiqur Rahman. Mr. Mohammad Sadiqur Rahman has obtained his bachelor's and master's degree in applied mathematics and informatics from People's Friendship University of Russia. He is awarded with Russia Government Scholarship. He has published more than 47 research papers in many international journals of good repute. He is currently associated with Daffodil International University, Bangladesh as an assistant professor. His area of research are machine learning, data mining, natural language processing, educational methods, onology, and knowledge representation. So without further ado, I would like to connect Mr. Mohammad Sadiq Rahman. He will be Students, kindly maintain the silence, please, as the speaker is connecting through online. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Welcome, sir. Thank you. Can I share my screen? Sir, yes, sir. Yes, please. But so that it's visible. Yes, sir. Kindly share the screen. Yeah, it's visible. Thank you, sir. Good afternoon. At the very beginning, I would like to express my heartiest thanks to Tirthankar Mahavir University and also the organizers of 12th International Conference on Fixed Modeling and Advancement of Research Training. Well, I have decided to take the opportunity to present two concepts about unlocking the power of large language models, especially in the education domain.
So let me talk about large language models first. I'm aware of that almost everyone has their present using some kind of LLMs, but if we if we Recording in progress. characterized by its massive scale and size, often involving billions or trillions of parameters, trained on diverse datasets sourced from a wide array of textual content. LLMs exhibit a profound contextual understanding of language, allowing them to perform various natural language processing tasks such as translation, summarization, question answering, and sentiment analysis. The generative pre-trained transformer, which is also known as GPT, this series has already exemplified the models like GPT-3 from OpenAI serves as a notable example of large language models. These models also follow pre-training and fine-tuning approach, leveraging general language knowledge before adapting to specific tasks. Sorry to interrupt you, sir. Actually, your While slides. LLMs showcase versatility in creative writing, content generation, and even the development of conversational agents, their deployment from ethical considerations. Excuse me, sir. Learning Hello. and various techniques. Yes. Rehman sir, Yes, speak, please. sorry to interrupt you. Actually, we are not able to see. Also concerned about bias, prejudice, but my concern is whether we can use these elements in education to ensure data education to the student, especially using the discriminate. Uh, Hello. Sorry to interrupt you, sir. Kindly play the slideshow, sir. Actually, we are not able to see the further screen. Like next slide. Sorry. Sir, kindly on the slideshow. Sorry, I can't understand. Sir, we are not able to see the next slide. Slides are not visible properly, actually, not moving further. Kindly play that slideshow mode of your PPT. Is it visible? Yes, sir. It is no. It is visible. Slide share mode में slides. Kindly start slide share mode. Okay. नहीं करी वाली हाँ PPT. So we were talking about LLMs and their capabilities. So by this time we have already understand what LLMs can do, and let's talk about the impact in industries and what their potentiality in higher education. In industries, there is a lot of use of it. We have seen that people are using LLMs for creating chatbots that can provide customer support, content creation, and also language learning, including speaking, grammar learning. But in higher education, how we can use these elements? There are some scopes like we can use this for automated grading,
in research assistant and also in virtual teaching assistant. We can train these LLMs as a teacher. We can take us in reading the script or essays or assignments for students. It can also help us to review scholarly articles and data analysis also. And thus, we can consider it a virtual teaching assistant in our day-to-day life. Those who are working in teaching, almost all of us are there. We have a role as a teacher. So, so, so the summary here, application in higher education, as I have already mentioned, it can help us in research. So how we can help? If we have data set that we need to find some things from that data set, or we want to make it external body, we can use these elements to train and retrieve insights from Students are requested to please cooperate for another 10 minutes. We will be winding up this session very soon. Please cooperate. Sorry? Sir, please you continue with your presentation. I was directing the students. I didn't get you point, please. Hello? Sir, you are requested to please continue with your presentation. Okay. So I guess Sir, you can continue with your presentation. basically what I was trying to focus that we have some opportunities. We can use these LLMs for research, content generation, and personalized learning that can be very helpful for the teachers in the education sectors. So how can we use this to uh, enhance our education? We can use these LLMs for interactive learning materials, let's say PowerPoint presentations or lectures or assignments. We can create with these things, LLMs, and we can share with our students. We can also make some personalized feedback systems, like it can be done for individual students or for the group of students. We can collect their assignments and other works that those they need to submit, and we can provide feedback faster than the manual evaluation. So it can help our students, and students engagement also can be a vital fact here. Like we can make interactive simulations using these LLMs that can help them to understand difficult topics like programming language or other topics. Those need some logical explanation, practicing and simulations. This can be helpful.
And also, sometimes it may happen that some virtual reality or some kind of experience can help them understanding or realizing the concept. This can be done by these LLMs also. And finally, I, I would like to say that it can help in, you know, translating the languages. So it may be helpful to teach a students who is not familiar to me or whose language is even difficult to understand for me. So using these LLMs, I can help them to teach what I want to teach, and I can also get uh, the content or what I want to teach him from that student. But the main concern, as I have mentioned in the very beginning, that these things are, the creation of AI, and there is already a big concern all over the world that whatever AI doing is it sufficient, or is there any chance to create any bias in the society? So it will happen that if there is a bias in the data, the language model must or language model may show some kind of biases in his performance. So that is a big concern for us. It can be a research field for the researcher in the computer science domain. Also, we can try to reduce these biases. And another important thing is whether it is able to maintain the privacy issues. If fails to maintain the privacy issues, then it can make it worse, not only to us or to the students, but also in the society. And another factor is that data security. The data that we are providing, it is privileged for our research purpose or for the educational activity, so that they are able to provide enough security or not. And uh, when we're using the generated content, like in the classroom, students are often trying to submit their assignments by using generated content, so that we are able to check these things properly or not. So these are the main concerns, and I must say that if we can address these issues properly, the LLMs can be of can be a great helping tool in the educational sector. And maybe if we can train our teachers properly on how to use these LLMs and how to overcome these classification problems, maybe it will be very, very beneficiary in the sector. Uh, with that, I will conclude. And so on. If you have any questions, Thank you so much, sir, for your insightful session. Thank you so much. Mementos serve us to remind of the event that we have participated in. Let us begin with the memento presentation. So now I would like to take up this opportunity to invite Professor R. Gidvedi sir to please present a memento to Dr. Prakash Rohan sir, Director NRSC ISRO Hyderabad, as a token of respect.
Thank you, sir. Now I would like to request Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Navneet Vishnoi, sir, and Dr. Sonia Jain to please present a token of love to Dr. Unnat Jain. Now I would like to request Dr. Shalini Ninoria and Mr. Nikhil to present memento to Dr. Varun. Dr. Varun Kakkar, observer from IEEE, Associate Professor, Department of PCE at BTKIT Dwarahat, Uttarakhand. Thank you. I would like to now invite Dr. Shambhu Bharadwaj and Mohammad Salim to kindly present memento to Dr. K.C. Mishra, Joint Secretary, IEEE UP Section and HOD, Electrical Engineering Department. Now I would like to request Dr. Sandeep Verma, Associate Professor, CCSIT, Tirthankar Mahavir University, to kindly propose a vote of thanks. Thank you so much, ma'am. The distinguished guests, esteemed delegates, respected organizing committee members, scholars, and participants, a very good afternoon to all of you. I, Dr. Sandeep Parma, Head Department of Humanities, CCSIT, feel honored and privileged to get an opportunity to deliver the vote of thanks on the occasion of closing and valedictory session of the 12th International Conference on System Modeling and Advancement in Research Trends, SMART 2023. First and foremost, let me extend our heartfelt thanks to each one of you who has graced this conference with your presence, be it physically or virtually. Your commitment to advancing knowledge and fostering collaborations has truly made this event a success. The rich tapestry of perspectives and ideas shared in this conference has undoubtedly contributed to the intellectual growth and development of the relevant domains of knowledge. I, on behalf of C Society and on my own behalf, would like to express my heartiest thanks to the Chief Guest, Dr. Prakash Chauhan, Director NRSC, ISRO, Hyderabad, and the guest of honor, Dr. Unnat Jain, Researcher, Fundamental AI Research, FAIR, Meta, Pittsburgh, United States, for sparing their valuable time to grace the occasion. I extend my thanks to Mr. Neeraj Dwivedi, Dr. Danila Pergin from Russia,
and Mr. Mohammad Sadehpur Rahman from Daffodil International University, Dr. Divya Saxena from Hong Kong for sharing their valuable insights. I wish to express my sincerest regards and deepest sense of gratitude to our patrons, Honorable Chancellor Sri Suresh Jain and Honorable Group Vice Chairman Sri Manish Jain, Executive Director TMU Sri Akshat Jain, Director of ABV IITM Gwalior Professor S.N. Singh, Honorable Vice Chancellor Professor Raghuveer Singh for their valuable support and guidance in organizing such an international conference under whose patronage this event could see the light of the day. I extend my gratitude to the authorities of IEEE UP section, Dr. Prabhakar Tiwari, Conference Committee IEEE UP section, Dr. Satish Kumar Singh, Section Chair IEEE UP section, Mr. K.C. Misra, Joint Secretary IEEE UP section, Dr. Varun Kumar Kakkar, Professor EC Department BT KIT Dwarhat Uttarakhand, and Professor J. Ram Kumar, Advisor IEEE UP section, for their valuable support and guidance in organizing this conference. I wish to express my sincerest thanks to Dr. Aditya Sharma, Registrar TMU, for his gracious presence in the conference. I extend my heartiest thanks to the principals of different colleges and HODs of various departments for their valuable presence. Our sincere gratitude goes to our distinguished guests, esteemed keynote speakers, session chairs. Your expertise and insights have illuminated our understanding of system modeling and guided us toward the forefront of research trends. Your contributions have been invaluable, leaving an indelible mark on this conference. I extend my sincerest regards and gratitude to Professor Rakesh Kumar Dwivedi, Conference General Chair and Director and Principal of FOE&C Society, for playing an exemplary and instrumental role in organizing this international conference. I would like to extend my heartiest thanks to Professor Ashwin Kumar Saxena, Conference Chair and Vice Principal of C Society, and Dr. Shambhu Bharadwaj, HOD C Society, Professor R.C. Tripathi, Proctor C Society, all technical chairs and all technical co-chairs for their valuable support and untiring efforts in organizing such a wonderful conference. I thank all the speakers and the delegates for their enthusiastic participation in this conference. I thank you all for your congenial presence and encouragement. I have been fortunate enough to be backed by a team of motivated and committed colleagues. I express my heartiest thanks to the different committee members of this conference. My thanks are also due to the faculty and staff members of these committees for their untiring efforts to make the conference successful. I am very much thankful to all the sponsors of this conference, especially to IEEE UP section. Without their generous financial support, it would not have been possible to organize this big conference. Now I take this opportunity to thank all the reviewers and technical committee members for providing their valuable comments in time and help towards the improvement of quality of papers presented in the conference. I sincerely thank the members of the advisory committee for their valuable suggestions. A special thanks to all the scholars and researchers who presented their work during the parallel sessions. Your dedication to pushing the boundaries of knowledge has been inspiring, and the diversity of topics covered has added depth to our collective understanding of the subject matter. It has been our pleasure to host all the participants of the conference at TMU Moradabad. The participants were very enthusiastic. I am thankful to all the participants for coming to TMU Muradabad to attend the conference. We have been fortunate to have some of the eminent persons from academia, industry, and utility working in the area of computer science. I convey my thanks to the print and electronic media for extending their precious time and full support to the conference. Last but not the least, I extend my heartiest thanks to all the student coordinators, volunteers, and participants for participating in the conference with great zeal and enthusiasm to make the event successful.
In conclusion, as we bid farewell to this international conference on system modeling and advancement in research trends, let us carry forward the knowledge gained, the connections made, and the inspiration ignited. May the seeds sown here blossom into groundbreaking research, innovative solutions, and enduring partnerships. Thank you once again to everyone who has played a role big or small in making this conference a resounding success. Safe travels to those heading home, and we look forward to meeting you again in future occasions. Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now I would like to request kindly raise for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Students can quietly leave the auditorium without making noise.